All right, let's get ready. Good with streaming. Like Trump is going to speak this evening. Yeah, so 6 के बाद में जरा हरकत हो सकती है, लेकिन जल्दी बुली को ना मारना चाहिए। उन्होंने अच्छा कनाडा मिल के उन्होंने यूनाइट करके किया ना, तो अभी बैक डाउन। तो अब लोग ये भूल जाएंगे कि महीने के बाद ट्रम्प कुछ करेगा मेरे ख्याल से। तो वो उन्होंने कहा यार तुम कुछ लेके आओ, तो उन्होंने कहा यार 10,000 बंदे लगा देते हैं। तो हाँ ठीक, चलो कुछ पॉलिटिक्स में एंड ऑफ द डे देखिए, एंड पे प्रेशर आया है मेरी ओपिनियन में दादा दादी से। 3 ब्रिटेन है ना, तो 3 बच्चे रह गए हैं पूरी दुनिया में। इंडिया में निकल गया, हांगकांग में निकल गया, सारे अपने अपने भाग गए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कॉमनवेल्थ के 3 बच्चे रह गए। तो उन्होंने कहा यार हमारे बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो वो जो एवरीडे मोहल्ले गलियों में होता है ना, तो वो गए बुजुर्गों के पास। कनाडा उठ के गया कि यार ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो वहां से कोई प्रेशर आया है कि भाई हमारा ही बच्चा है, तो इसको ना तंग करो, राइट। तो ग्रैंड पेरेंट्स तो वो हैं, तो ठीक है यार। तो उसने कहा, तो मेरे हिसाब से इंटरनल डील उधर ऊपर से, क्योंकि ट्रूडो से और के पास तो हिम्मत नहीं है, इतना नहीं है गट्स, तो ऊपर से प्रेशर आया किंग से, जो भी है कि यार देखो उधर से तो फिर उनको चाहिए ना इंग्लैंड मिलिट्री जोन के लिए। तो उन्होंने कहा कनाडा को तुम छोड़ दो, तो यूक्रेन को हम कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनल खाते में ये डील हुई कि मेरे बच्चे 3 तो बच्चे रह गए पूरी क्वीन के। हाँ बस उसके बाद 95 में हांगकांग चला गया, 47 में इंडिया भाग गया, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान सेम। आहिस्ता आहिस्ता उनकी एम्पायर टूट रही है, और ये 3 वो कहते हैं यार इसको ना, सारे गया हुआ है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन ने आके इंटरफियर किया है कि डील बनवाई है यार इन 3, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो इतनी दूर बैठा है जिस तरह आपका एक बच्चा कैलगरी बैठा हो, अब मिले ना मिले कोई बात नहीं, राइट। तो और साउथ अफ्रीका पहले ही ऊपर से नॉर्थ से आ रहे हैं, तो एक ही तो उनके पास जोहानसबर्ग रह गया है, तो वो भी चला जाएगा तो मंडेला के बाद। सो पॉलिटिकल गेम इज ऑल अबाउट, तो
मेरा ख्याल है ये रोते रोते गए हैं ऊपर दादा दादी के पास के यार इसको कहो कि हाथ वाला रखे। इंटरेस्टिंग टेक टू। मैं असल में उसको बिल्कुल गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स से लेके चलता हूँ क्योंकि ह्यूमंस है ना आफ्टर ऑल। तो मैं कहा यार दिस इज द वे आई ट्रांसलेटेड इट कि कनाडा बेचारा जो है ना एक इकलौता भाई है इस साइड पे या बहन है जो भी है। है हाँ तो And then they have just realized कि अगर हम अपनी refinery बना रहे हैं अपना उसमें में, we really don't need to depend on America. यहाँ से ऑयल अमेरिका जाता है, अमेरिका से वापस। बड़े अच्छा काफी चीज ये लोग टैक्स आपने किया ना प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। This threat will be remain. नहीं लेकिन वो जब तक हमारा ऊपर किंग जिंदा है ना कनाडा को कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि हमारे को अथॉरिटी उसकी है क्योंकि वो इंग्लैंड से नहीं कर सकता कि उस रीजन में ना इंग्लैंड बड़ी पावर पर। और आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान को मार नहीं सकते कभी भी नहीं मारेंगे क्योंकि इंडिया चाइना के दरमियान जो पॉलिटिकल जगह है ना उसको बढ़ने भी नहीं देंगे मरने भी नहीं देंगे। वो जब वो मरने लगता है ना तो उसको वो थोड़ा सा इंजेक्शन दे देते हैं कि यार इसको ना बढ़ा दे क्योंकि वो अगर मर गया ना तो वो इतना जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव जोन है। तो वो अगर पावर है ना एम्पायर उनको फील होता है कि उधर उन्होंने कतर रखा हुआ है इधर पाकिस्तान के चाइना और इंडिया के दरमियान में। तो वो हमें जैसे कहते हैं लॉटरी सी लगी हुई है, ना मरने देंगे न चढ़ने देंगे बस जहां पर हो। लेकिन तो वो बड़े ना इट्स ह्यूज, अगर आप देखें ना एम्पायर्स कैसे बिल्ट होती हैं तो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि पाकिस्तान को उन्होंने लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है पूरे। और जैसे ही उसकी लाइफ आईसीयू में बीप तेज होती है तो थोड़ा इंजेक्शन दे देते हैं राइट। तो इंडिया से थ्रेट है इधर चाइना से थ्रेट है राइट। तो उसको मर्जिंग के बीच में वो एक ब्रिज बना हुआ है राइट। सो तुर्की तो ले लिया आहिस्ता आहिस्ता, मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर अब काफी इसराइल के आ गए हैं तुर्की की तो but US is losing its power slowly. Maybe another 50 years, may not be a superpower, but superpower. क्योंकि अब the rise of China, India, it's bothering them, right? So अभी जख्मी है तो let's see. हाँ ऐसे ही कसूर भी इनका ही है लेकिन चलो। I see the thing is those are geopolitical issues. मुझे 2 पॉइंट चाहिए बस। मुझे मेरा काम 2 पॉइंट्स का है, मुझे करवा नहीं है कौन। आई एम सेल्फिश इन दैट सेंस के हमारे 2 पॉइंट्स का बस है मसला। हाँ हमारी जिंदगी S1 R1 में ही होगी, घूम फिर के हमारी जिंदगी S1 R1 में रह जानी है। So interesting take on events. Yeah, 100%. The good thing is North America, ये Western countries में पब्लिक जनता को जो ना तंग नहीं करते। आपको ठीक है यार, लीव बत्ती ने हाँ pressure is down even today. All right, let's upload the areas. Not a big movement last night. Let's look at Forex Factory first thing, guys. Let's we have at 10 o'clock huge news, which is Jolt's jobs opening. So he's going to speak after the market is closed. So that's a good thing. Factory. So 10 o'clock, we are going to worry slightly. Just don't be in a trade, please. So what's the strike price of today? It becomes 22.90. 22. Oh, sir, 100%. 20,900. 990, that to be exact. Meaning के जो लोग बहुत लंबी पोजीशन करते हैं ना, एक एक दिन 2-2 दिन वेट करते हैं ट्रेड के अंदर, तो अगर उन्होंने पोजीशन से निकलना है ना तो हमने एक नंबर दिया होता है कि अगर आप जो लोग CFDs कर रहे हैं या forex.com या स्टॉक इसके
EFTs, तो वो अगर वो 4-4 दिन बैठे हैं, 5-5, ये एक दिन का ट्रेड नहीं है, उनके लिए भी हमने ये स्ट्राइक प्राइस रखी है कि अगर आपने सेल लेना है ना तो इससे नीचे लीजिएगा, तो ये सिर्फ उनके लिए मैटर करती है। तो नो प्रॉब्लम, ये शुड नो बिकॉज इवेंचुअली यू गाइस विल गेट देयर। आप जब FTMO कर रहे होंगे तो 5 बजे ये स्ट्रेस नहीं है, आप लोग मल्टी डे ट्रेड में चले जाएंगे। तो विद इन 3 मंथ 6 मंथ जब थोड़ी सी, क्योंकि इनकम एपेक्स से आए, बुलनॉक से आए, तो आप अगले अकाउंट में, फिर उससे अगले, फिर अल्टीमेट वो है कि आप 200 पॉइंट के लिए खेलते हैं। अब अंदर जुनैद भाई हैं, वो मिनिमम 15 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं, हम तो 2-2 पॉइंट ले रहे हैं ना, क्योंकि लाख का अकाउंट है, अगर 1000 नहीं बनता तो फायदा नहीं है ना। तो वो उन्होंने खेलना है एटलीस्ट मिनिमम 10 पॉइंट पर। तो अब वो कल अगर 32 पे बैठे थे, 35 से मुड़ गई प्राइस जो ES की है। अब 35 से गई ऑल द वे ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट वापस गई। ये 5000 का ट्रेड था, एक ट्रेड। हाँ, तो चले वो तो आ गई, लेकिन जो हमने बाउंस लेना था ना, यही बैठ के संडे को डिसाइड हो रहा था कहाँ से अगर गिरी, तो पहले तो पता नहीं था गिरनी है चढ़नी है, अगर गिरी तो कितनी गिर सकती है और कहाँ से चढ़ सकती है। तो मैंने 40 प्रोटेक्ट किया, डैनियल जी ने 32, उन्होंने 30, वो 35 में आ गई। सो काइंड ऑफ फेल इनटू माय रेंज अगेंस्ट इट। तो लेकिन अगर वो एक ट्रेड जो है ना, फिर आपको होता है कि हमने निकलना कहाँ है, तो वो वाली प्राइसिंग। तो अगेन डिफरेंट अकाउंट साइजेस, वो शायद हफ्ते में 2 ट्रेड डाले, राइट। सो उनका ये 2-2 पॉइंट से नहीं, तो उनका चार्ट ही डिफरेंट है। वो 60 मिनट देख रहे हैं और 240 देख रहे हैं और 1440 देख रहे हैं, ये बड़े वाले। हाँ जी, तो वो देखते हैं कि कहाँ से मैंने बाय करनी है और कहाँ निकलना है, क्योंकि उनके पास मार्जिन है। मार्जिन मीनिंग कि लाख का अकाउंट है तो वो 10 मिनीज भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लाख के अकाउंट में 1 मिनी करते हैं। एक का मतलब है कि 12,000 होल्ड कर जाते हैं नेगेटिव प्लस द लॉसेस। तो एक इसके ना मैथ है, मैथ ये है कि अगर 1500 का अकाउंट है तो 1 माइक्रो मोर देन इनफ है, उसका रिजल्ट वही निकलेगा। अगर 3000 का अकाउंट है 2 माइक्रो लें, 7500 का अकाउंट है, चले आप 5 माइक्रो ले लें। अकाउंट साइज है ना, पास करने के लिए ये ठीक है। आप जो है 1500 में हम लोग 1 मिनी ले लेते हैं, क्योंकि उसकी गुंजाइश इतनी किया कि अकाउंट का साइज नहीं है। लेकिन as your account grows then you can start to take, लेकिन जो फाइनल मैथ है, हर 1500 का 1 माइक्रो बनता है इन ए पीए। अब मेरा वो बुलनॉक्स का रात को क्लियर हुए हैं, कुछ 3 ही दे रहे हैं, तो वो 2500 का है अकाउंट पीए का। तो अगेन 2 माइक्रो 3 माइक्रो, बहुत अच्छा ट्रेड आ गया, एरिया पे आ गया तो मिनी डाल दिया, क्योंकि मैंने जितने पिछली कंपनी थी FTT 5 माइक्रो से की सारे एवरीडे। सो नैस्डैक जरा, लेकिन पेशेंस के एरिया क्या है, मिड बैंड क्या है, विदाउट इट। सो एंड आई विल कीप एवरी डे, आई लाइक टू गो ओवर के मेथड से बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने। All right, let's update this and Main thing is Trump want US banks to come to Canada. नहीं आने देंगे, एक इसको मर जाएगा, इतने से जान, इतना सा अकाउंट है हमारा 1500 एक मैं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए इकोनॉमी है ना, आपकी छोटी सी दुकान है, आपका एक डॉलर स्टोर है, उस प्लाजे में वालमार्ट आ गया ना, आप तबाह हो जाओगे, याद रखना। छोटा बिजनेस मर जाता है। यूरोपियन में वो आने, गली मोहल्ले में क्या होता है, छोटी छोटी दुकानें खुली हैं सब्जी की। ये अब आप कनेडियन टायर में आप बैटरी से लेके ग्रोसरी ले सकते हो, रॉन्ग है ना। ये उन्होंने क्या किया, एक बड़ी कॉर्पोरेशन आई, अब तो दुनिया में बिग बॉक्स स्टोर का कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। एलिमिनेट स्मॉल बिजनेस, राइट। अब यूरोप में जाएं, इंग्लैंड में भी चले जाएं, गली मोहल्ले की शॉप्स हैं। अगर एक बंदे ने $1, अब बोल्टन में विद इन किलोमीटर $3 रमा है, ये रॉन्ग है। पता क्यों? एक छोटा डॉलर स्टोर खुलता था 1-2 लाख का, उसकी एक इनकम चल रही है बंदे की, डॉलर रमा आता है 3 जगह खोल देता, वो तो गया ना बेचारा। यहाँ पर पिछले 20 साल से CRTC लड़ रही है, ना डिश नेटवर्क आने देते हैं, ना डायरेक्ट टीवी आने देते हैं। क्यों? ना कॉमकास्ट आने देते हैं। यार इतना सा रॉजर्स है उसके मुकाबले में, या इतना सा बेल है, उन्होंने एक डाला है और ये
आपके सेल फोन को भी नहीं आने देंगे, आपके टीवी को भी नहीं आने देंगे। सीआरटीसी का रोल है फ्रेंच डालो फिर कुछ करेंगे, तो इट्स नॉट हेल्थी फॉर कनाडा। अगर वो आ गए या कैनेडियन वही ऑन करें, फिर हम 51 स्टेट ही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रूली। रॉजर्स भी गया, बेल भी गया, ठीक है मोनोपोली है, लेकिन वो इतने बड़े हैं। एक सिटी बैंक आके ब्रांच खोल देना तो कंज्यूमर के लिए फायदा है, लेकिन स्मॉल बिजनेस तबाह हो जाएगा, राइट। सो इट्स ऑलरेडी अमेजन तो घुसा हुआ है, राइट। तो घर घर से तो इट्स नॉट फॉर ए ह्यूज इकोनॉमी टू गो इनटू अ स्मॉल थिंग। एंड लेकिन अब यहाँ पर आपको याद है कि नहीं, फ्यूचर शॉप होता था, हेल्थी कंपटीशन था, हेल्थी। बेस्ट बाय आए बाय किया, बंद कर दिया, फ्यूचर शॉप एलिमिनेट कर दिया उन्होंने, लाइक सो कोई भी बैंक आया, हमारे पास चारों के 5 बैंक्स हैं, उनका एक ही हमारे लिए, तो sometimes you don't let them do certain things, which I agree, right? So you don't टीवी का तो अभी और जब तक नहीं है वो टीवी बहुत। हाँ, लेकिन वो सॉरी लाइसेंसिंग कॉपीराइट इशू है ना। लेकिन इमेजिन करें डिश नेटवर्क आ जाए, डायरेक्ट टीवी आ जाए, कॉमकास्ट आ जाए, आप तो खत्म हो गया, पूरा कनाडा ही खत्म हो जाएगा। तो और सेल फोन में अगर वहां से सिर्फ वराइजन पिट रहा है कि हमें टावर्स की फ्रीक्वेंसी बैंड दे दो, और भाई लाइक ना रॉजर रहेगा ना, तो फिर हम 51 स्टेट अनऑफिशियली हो जाएंगे। अगर ये 3 चीजें आ गई, टीवी, फोन और आपका बैंक, तो कनाडा सिर्फ आप पेपर में रह जाओगे। तो ए बिग एनी मोहल्ले में भी एक डॉलर स्टोर के सामने एक डॉलरामा आ जाए ना, तो वो तबाह कर देता है, क्योंकि उनके पास परचेसिंग पावर है, तो फिर मोनोपोली बन जाती है। अब देखें डॉलरामा के अंदर कोई चीज डॉलर की नहीं है, अब 2-2.5 से तो अपनी तो स्मॉल बिजनेस को किल करना हो ना, so bring your box store and push it up there. And in Germany they don't allow a lot of box stores in smaller cities, क्योंकि वो आते हैं and then they will eat up like the small grocery farming everything, right? Because imagine Walmart, right? When that thing gets opened, you walk in, you walk out with everything, from your clothes, from your shoes. And shoppers, I remember growing up, on a Christmas day, you couldn't open stores. So shoppers decided, we are actually a pharmaceutical store, so we can be open. And then they slowly started adding groceries. Walmart didn't have groceries, right? So I think I'm just waiting for Canadian Tire to have groceries. That's all that's left, right? Because क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप एक दफा एंटर हो ना, तो आप वापस ना जाएं उस स्टोर से वापस। आइकिया देख लें, आप एंटर हो, एग्जिट निकलते 60 मिनट लग जाता है। इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइट? सो I don't like these big box store. I like to support local business, small business. That's just the way. But because monopoly is not good for a healthy economy. All right, enough ranting about. Let's go back to our 2 points. So, all right, good morning, everybody. Tuesday, February 4th, 9:06 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Tariffs are paused for a month. The tariff story is kind of gone. So market has bounced back. Let's look at Nasdaq. Nasdaq, the high has been 21,600. The low has been 21,245, 242. Let's put 245. Okay, so the night 21,600. So let's put in 21,600 as a box and 21,240. Let's put that as a number. So let's pick a mid-range between it. 21,600 plus 21,240 divided by 2. Your mid-range is 21,420. 420. Wow. What a number. So this is your mid-range. Right now the price is for very much close to your mid-range. ES की क्या price? नहीं, I mean अभी क्या चल रही? ठीक है, very close to mid-range. So both are very close to mid-range.
If the base is up, let's see by 20 minutes which way to happen. So we'll try to go and test one of those regions. It's not a huge gap, 6069 to 87. No, that's big because of gap 2. 6069 to 5987. So 13 plus 70. Wow, big one. 355 last night. Now we are hovering right at PP at the moment in between these areas. So yes. So we'll worry about those later. Let me just restart my charts. Areas are updated. You guys can refresh and the charts will work with the newest levels. And hopefully no issues. Computer accidentally put an extra 0 last time. So far will look good. All right, no problem. So ES, Nasdaq, Russell, Dow Jones, crude oil, gold, natural gas, 6C, 6E, 6B, FDAX, copper, silver, crypto, Ethereum, and crypto BTC. That is all done. Let me do a camera check. So we have a personal camera this way. Board cam is good. Oh, what is it here? We have screen cam and classroom cam. Good. These cameras are working as expected. So again, we'll work. Bullnox is this. Legends. Why does it keep crapping out? Take profit. Let me turn on my WhatsApp line so I can answer your questions. WhatsApp line is open. Tradeovate is open. Rhythmic is open. Do a login and we're good. 10 o'clock news, guys. So we'll put an alarm for a reminder for 9:58. Because let's put a stopwatch, a timer. So 40 minutes. What's that? Oh, yeah, Sara gap. Every gap is. So let's put a alarm at 35. Wait. So 30 plus 20, 50 minutes. So let's put it at 45 minutes exactly. Murtaz is going to start, not yet. He's in the office, but we're setting up a Zoom conference thing. So the moment you see Murtaz link on super areas, you will see. So 45 minutes. Yeah, let's set it up at exactly 44. I'll do 40 minutes to kind of remind me. All right, 40 minutes. I have my schedule set. That's where your news for JOLTS opening is gonna go. So, all right, I'm missing a couple of steps for today. Trading view still not updated. That's fine. And I gotta do this. Join a session. This is on. So I can bridge you guys with his mic. 622. So one new video went online. That is our for Bullnox. Anybody wants to know? Sir, मैंने आपको quickly बताना है. Sorry. Daily limit है 1100 डॉलर. 50,000 दी. ਅਸੀਂ 1100 lose नहीं कर सकते. So Bullnox in a single day. If you lose 1100, that means you trading for that day is halted. Account is not gone.
You have to trade 10 days. There's no minimum. Okay, maximum for our account is $1,000 because it's a 40% limit. So if you take, let's say, 2,600 and 40%, 50,000, because we all have 50,000, 26, 40%. So that's almost $1,000. It's good. So no, 40%. हमने 2600 बनाना है ना, 2600. So we have to make 2,600, 40%, 1,040. So we will do $1,000. So $1,000, and you must put a trade once a week, even a penny trade or a dollar trade. And out of the 10 days, 8 days are regular trading, 2 days can be flipping. So they allow flipping, meaning that if you finish your target in 8 days, next 2 days just open, close, open, close. So our target is to make 2,600. Let's work together to make it divided by 200 to 150 a month. A month, 2,600 divided by 20 days of trading, 130 a day. That's it. So 150. But if we lost 350, we're calling it a day. All right. So that's the plan. Let's work with it. 350 will close. 150 will close. 5 micro maximum in from the area. If it's S2, R2, 5 areas, let's do it. And then we together, I will start today. You can start today. Right. So 5 days, so rules. Daily loss limit, 1,100. So my video is all full in detail on how to take a bull knocks. I made a payment. So we did 11 accounts. They allow only 3. Only 3 PAs with a copier. So 1,100 maximum daily loss. Live trailing threshold, like Apex. 10 days of trading. 8 days are okay. 2 days of flipping. No minimum, but must trade 1 day out of a week. So, meaning नहीं देखो वो सिर्फ प्रॉफिट तो थल्ले आवे वो काम अगर 100 200 देख के 100 माइनस होया 300 दा लॉस है 200 देखिया ते बंद कीता -100 ते वो 300 कटणगे क्योंकि थ्रेशोल्ड लाइव चल रहा है सो बन गई मैंने अपलोड करके बुलनॉक्स की 49 मिनट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी so upload video is fully there you can watch it on our channel हो गई वीडियो हो गई अपलोड भी कर ली exactly all the rules and they will pay and we will get $2,000 per account so if we have 3 6 grand is sitting there if we don't mess it up congratulations 148 was the fee and where is it coming from 450 so where is it coming from so still very close why am I not seeing he's not sharing anything let me quickly turn on my Ninja so it doesn't have issues So, of course, the free stream audio is going to get cut off on every platform except superareas.com. And let me update it. See, I knew I was missing a step. Good morning, Ji. नहीं अभी नहीं रात का है लेकिन वो अभी R2 नाइट सेशन बनेगा ये रात का है customize channel content sorry guys I forgot to put the YouTube link so YouTube link is active now on the website there you go that's done let's make the February 4th so this mid-band worked guys this mid-band on ES worked all right
Now the superareas.com stream is updated, so that's kind of good. So that's minimum, take profit, bull knocks, legends, 6016. Let me bridge you guys into Daniel's mic. Another good update for Trinity Office. Anybody who's using Trinity Office, starting today, we have hired a full-time coach and a trading, like I should say, just like my job is here to lead this floor, right? So Monday to Friday, Daniel teaches. I kind of do the orchestra, like a music to run the. So Monday to Friday, our Trinity Office, there's a person named Murtaz, Murtaz. So it's from 9 a.m. to 2 p.m. daily, he's going to start that floor. So he's there today. His job is to trade only ES and beginners, advanced. So same concept is there. From 9 to 11 is just coaching, guiding. And from 11 to 2, if you have questions, you can sit down with them. So we have a full office, slightly bigger than this, on 1575 Trinity Drive. You can join his Zoom starting in a couple of days. So now we have 3 Zoom options. You can, of course, morning, Daniel will give that 2-minute brief. Then I will take over. This office Zoom is going live. We have Happy Zoom. He does it out of his home or the office, and he does Nasdaq trading only. He doesn't touch, and he's not there to really guide you anything. He will just say, hey, I'm about to take a trade. Do you want to take a trade? All right, let's take a trade. So that's a different style of trading. My style is slightly different, but every trader is different. So then we have now this third option, Mr. Murtaz, from 9 a.m. to 2 p.m. So if you ever want to go sit there too, and you get bored of me talking, because again, my Daniel's talk is different. He touches 15 markets in 2 minutes because again, he has different things to do and say. Then I come over, I talk Nasdaq and ES. Then we have an exclusive guy for Nasdaq. We have an exclusive guy for ES. So if you ever decide, hey, I want to experience a different, it doesn't cost you anything. You can just go and sit down and experience that too. The 1575 Trinity Drive opens at 9 o'clock. Until 2 o'clock, you can sit there, talk to them. Other fellow traders are there too. Only difference between you and them is they are leasing the software. You have bought the software. 2 different things. So there's some guys who want to buy the software, some who want to lease the software. They're not allowed to come here, but you're allowed to go there, right? So that's how the hierarchy of the organization works. So just wanted to give you this great update because I had a lot of users who went into leasing, and I used to be there. And I was teaching them ES and mid-band and this and that. Since I migrated here, there was nobody there teaching them ES. So starting today, ES problem has been solved. So another alternative that if you ever want to decide to go there, you guys are more than welcome to. Address is on superareas.com at the bottom for that office. GG, sir. I haven't. If I see, I recognize by faces, but not by name. Sorry. हाँ हाँ कौन हाँ हाँ ले रहे हैं सर
मंसूर ने कोई 2000 तो ले लिया उसने। वो नवीद साहब भी हमारे ही हैं, राणा साहब भी हमारे ही हैं। वो जो क्योंकि पॉलिटिकल इंट्रोड्यूस हुआ 2 माह पहले, वो जब उन्होंने 3-3 हजार, अब जे भी पहुंच गया है, अब वो जे के भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ लास्ट 10-12 करता है, 100 बंदा है, 200 है, वो सिर्फ फ्लोट होता जाता है। There you go. We are in the, let me just fix this. I gotta do one quick thing here so I can get my charts going. Tick trader. Bless you. Okay. All right, let me bridge the mic in and then cut the stream off for free streams. Good morning, Ji. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Can you microphone check if you can hear me, guys? Can you, guys? Good morning, Walaikum Salam. Ash, Kesh, good morning, Jamal bhai. Manish, good morning. Ranjit ji, good morning. Saurabh, good morning. Shadi, Clifford ji, good morning. Kiran ji, good morning. Samir bhai, Junaid bhai, Walaikum Salam. Jindagi, good morning, ji. Jagdeep, good morning. Choisa, good morning. Rizwan, Anil, Hitesh, good morning. Thank you, Akeji, thank you.
Quick review for the disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training for not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. We're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stop and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our charts are not buy and sell or areas or buy and sell offer or any type of financial advice. These areas are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, our high is 6073, almost yesterday high, if you see, very close to yesterday high. Only Nasdaq hit our yesterday high. S&P just kiss and shy of 1 point from our yesterday high area, and actually almost same area as yesterday. And right now, S&P 500, 73 to 83, 6,073 to 83 is high. Low is 59, 57 to 47. Nasdaq, our high is 21,700 to our 740, and our low is Nasdaq low is 080, 21,080 to 130 to 080, 130 to 080. Base is up, pressure is down. Below magenta mid-band, just sitting at top of the value area. High to go low would be a good strategy. R2, today R2 will play a very, very critical role. Why? Because it's yesterday, our high area, and the bounce back, the first bar that closed exactly, if you see, around 5 closing time, 5 o'clock was our R2 today area, R2. Exactly our closing was at our R2 area. So that will be a very strong resistance area today. Today, news, only the one big news I can see right now is Trump's speech at 5:10. And then 11 o'clock, we have member speech, Bostic speech, and then daily speeches at 2 p.m. Factory orders and job opening at 10 o'clock. Good, going to go up and that to go down, but overall, it will stay low because of the panic we have. Low to go up and high to go low, but low already done, 240, the push that we had on our Sunday night time. And then we had a check of 10 o'clock, if you see. First price went down, our pressure was down, and then it get pushed to the upside to fill up the gap. Actually, yesterday, a lot of people were surprised why price is going up. It's going up to fill up the gap, and exactly price fill up the gap we had on our Sunday opening. 1 week time, 5-day cycle, and it just fill up in 1 day and then shoot to the downside. So yesterday, 133 points pushed to the upside on S&P 500, 657 points pushed to the upside on Nasdaq. Retracement on Nasdaq is 357, and S&P came down 82 points. And right now, after a higher low, we are not getting a lower high or a higher high. So it means if we are not getting a lower high, then price might go up. And if still we are not getting a lower high, lower high, right, the price will change this 59.87 low, and it might change to the downside. Overall, everything changed to the downside. But right now, slightly pressure is down. Multi-resistance at our 31 area, 60, 31 area. Why multi-resistance at that area? Because you have top of the value area and magenta mid-band is sitting there, and that's where the strongest resistance is. Same thing with Dow and our Russell 2000. Dow and Russell 2000 are doing same thing. Not doing much. It's just dead, sitting above PP, but pressure is down on Dow. And Russell 2000s exactly copy all of the, it looked like 10 years before market, 15 years before, these all four markets were sync, and today exactly they sync and feel like we're moving in same direction.
Our Canadian dollar, yesterday we had a very strong push to the upside. Again today, very strong push to the upside, hit our expected high. While we were sitting here, even 7:30, 7:45, it was lower than yesterday high. And then after this 2 hours, price just shoot to the upside and reached our exactly at our expected high for the day on our Canadian dollar. British pound is up above value area, above PP. Not much movement, but if I compare, yesterday it went up, retraced down, and trying to create a diversion to the downside. Euro already creates a diversion. Euro already hit our expected high for the day. British pound is not. So Canadian dollar, our high for the day is done. Our euro high for the day is done. British pound is not. Crude oil very close to our expected low for the day. Base is down, pressure is down, below value area, below PP, below S1, and very close to our expected low for the day. And our crude oil is just not much, but it just bouncing back up from our expected low for the day right now. FTX, nighttime when it opened after 3:30, it went down, test the low, night session low, and then shoot to the upside. So right now pushing up. So we have a very nice, beautiful push to the upside. Gold, guys, keep eye on our expected high for the day. Yesterday went to our, even closed to our extreme high for the day, but right away it came down. Next hour it came down. Went up around after 9:30, went up, and then 11 o'clock it came down. Came down quite a bit, but overall $34.60 retracement that we had from 69.80 cents, $69.80. Right now, $32.20. Very close to our expected high. If you remember, I told you guys maybe in this contract or next before June, we'll see gold 3,000, maybe earlier, but it's going up. It's very strong push to the upside. So right now, gold is sitting at around $70.20, $70.20. One way push to the upside from this morning. It started going up after 4 o'clock, 4 or 5 o'clock, going up. And same thing with the copper. Copper yesterday went up. Right now, retracement and above PP, above value area, and copper is also pushing up. And if gold is going up, definitely it will take silver to the upside. Silver already break our yesterday high. 59 cents push to the upside on silver. $1.13 push swing high. Came down 52 cents. And right now, 59 cents push to the upside on our silver. Silver, copper, gold, they move in same direction, especially silver and gold. You can just predict this very easily. If gold is going up, silver will go up. Bitcoin is going up. Bitcoin around 100,000, 100,000, 1,000, 101, excuse me, and 1,000. $4,500 push to the downside yesterday. And right now, retracement of 57% of the push that came down. So overall 2,600 push to the upside right now. And same thing with Ethereum. Ethereum is going up. Right now, $183. That's a very nice push from this morning. That's a very nice push from this morning. It went up 626 and retraced to 40. And right now, look like it will break our yesterday high. Magenta midband on our Bitcoin. Bitcoin at not R1, but very close to R1 area. Again, guys, today, please don't hold any trade. Position traders, wait for the Trump speech. Don't leave anything after 4:50 p.m. This is a request to everybody. Please don't hold your trade in the market only for today. You can trade after 7 p.m., 7:30 p.m., but try not to hold any trade at 4 p.m. because today Trump's speech will bring the movement in the market. We'll see after his speech what will happen.
And please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. There you go, guys. Nothing major. 10 o'clock. We got 13 minutes for the news for high impact. And we'll worry about that. So with Trump, this whole 4 years could be a market move every day. So don't think that every time he opens his mouth, something's supposed to happen. I think first 2 3 months are more critical. Sorry? First, 2 3 First, months, yeah. So first 2 3 and months are, and then after that he will I'm honestly settle. watching his ability to work with Yeah. Elon. Until then, we'll see. All right, so we are at night high, guys. So let's Nasdaq R2, guys, R2, please. NES R2 as well. So base was up, open very close to mid-range, went towards night high, right? So again, look at that box we made. Vikramji, thank you for doing that. Is just to give an idea for those that are new on the board. You have a high range, you have a low range, you have a mid-range. So if this was night high, this was night low, we were looking closely which way the price will go. If the base is up, then the more chances are it will go and test, which is it's already now testing that, heading towards it. But you took 4 points, 5 points, 8 points, doesn't matter. So this trade, 9:30 trade is done. Same thing with Nasdaq, opened up across above around 400 zone and went to the night high. It actually bounced from 523. So let's see. I'm not taking any trade for Nasdaq until R2. So 21,529. Low कितना बनाएगी अभी देखते हैं. So let's जी सर. हैं? मैं check करता हूँ एक second. So केड़ी कंपनी है? कनेक्ट नहीं हो रहे सर. हॉटस्पॉट ट्राई करो इस वेले इथों नहीं हॉटस्पॉट ट्राई करो देखना है मैं एक चीज 420 21,420 So let's see. Went up night session. So the computer predicted from 520 to 540. That area is done. So R1 is done. Computer said for Nasdaq that it should bounce from that area. Let's look at ES. What did computer predict? 42 to 45. Not yet. It didn't go as high. It went only at 31. So they're slightly out of sync today. Slightly. This is a mid-band trade, and let's see if it gives you a couple of points from here. Done. Your first mid-band gave you, I saw 1 point at least. You took a point? Okay, that's fine. It's not in the same. Until 8.5, 8.75, until 9, yes. Because the good thing about this is it's a 30-20 mid-band is the same. So that's all. I'm just looking at which way Nasdaq wants to go, and it will take that mid-band up or down with it. So it's struggling right now in this mid-band, but your first mid-band has passed. If you took a trade at 6025, you're done. 1 point, 2 point, 3 point, nahi chale? Any dust. Already there you go. Every single thing passed.
the first mid-band, both are green, large triggers green, mid-band green, price came from higher high, no divergence. So computer was saying, if you bought it 6025, you're done for the day. Your first trade is truly done in first 13 minutes. It's second trade, but the night 30 trade, but experienced users can do that. But the first trade is done officially. Bottom of the bar was there. So don't risk, don't worry about, you already know your losses within that trade. They said, any does page? 5? Yeah. एक सेकंड मेरा एनी डेस्क तंग कर रहा है 538 एक्सेप्ट कर ले. Now it's coming from double top, so it's a bit of a divergence here because BBs did not go 100% up, but everything is still green. So let's see. सर निंजा में कोई प्रॉब्लम आ रही है. एक दफा और करें. Bottom of the bar, retracement divergence, and give you a point from the bottom of the bar. Nasdaq is again touching R1. ES is not. ठीक है, मुझे ग्रीन चार्ट सब कुछ ग्रीन नजर आता है. कुछ आप तो सिर्फ 2-3 मूविंग एवरेज की है. तो लेकिन 30-20 में कुछ मुझे गलत नहीं नजर आ रहा. पहले तो इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ना, इस बार को. देखिए उतनी स्लो मार्केट हो गई जितनी 2 दिन पहले ओ पागलों की तरह. So let's save this workspace. Still struggling right here. In this bar. Complete opposite of what you guys are used to in the last 2 days. 10 o'clock for news tomorrow. Yeah, so news is at exactly just waiting for Murtaz to enable his Zoom. All right, no, Nasdaq wants to go down. प्रिंसिपल अगर डबल टॉप हो तो वहां पे मिड बैंड डबल टॉप जनरली वो करता है, इसका मतलब कि आपका डाइवर्जेंस है, क्योंकि बीबी सेकंड टाइम अराउंड नहीं ना गए. ये मिड बैंड भी पास हो गया कोई, क्योंकि 30-20 में तो लार्ज ट्रिगर्स खुले हुए हैं, ग्रीन है, मिड बैंड के करीब है. 30-20 मुझे गुड कन्फर्मेशन दे रहा है कि मुझे अभी नीचे जाना, मैं क्या करूं. मेरा भी वहां पर भी मिड बैंड खड़ा है ना, तो ये मिड बैंड भी चल गया. अभी तक तो इसने 2 दिखाया मुझे. $87 का एक निकाला, 1.5 निकाला, और आपने पिछले में निकाला, पिछले मिड बैंड में. अच्छा 2 मिड बैंड हो गए आपके. ठीक है, तो टारगेट आपका ईएस में अगर हो गया है, और इसी बार में प्लीज नहीं जाना. सर को मसला ਤੁਹਾਡੇ इंटरनेट ਦਾ आ रहा है, निंजा भी लोड नहीं हो रहा. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ पूरे कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे, मैं देख रहा हूँ सुबह, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल.
हाँ जी बैक एंड पे देख लो विंडो ऑपरेट तो नहीं करी नहीं मैं उन्हें तो नहीं हाँ करेगा। मैं रिस्टार्ट करें एनी डेस्क बंद हो गया अच्छा नहीं वो कह रहा था यूजली के पीछे विंडो ऑपरेट चल गया ना वो सपोर्ट नहीं कर बाकी सेकेंडरी रास्ता एक दिन बना होने से करे बैठे हैं यहाँ पे जल्दी आ रहे हैं मोबाइल पे जा रहे हैं हाँ जी कैसे आप मुझे सॉरी नंबर जगह नहीं हाँ जी R2 guys R2 we're all waiting for R2 और दोनों दोनों स्पेशली Nasdaq में वो पॉसिबल है कि ज्यादा अच्छा दिखाए ये अभी स्लाइटली आउट ऑफ सिंक है R1 like your Nasdaq went to R1 but ES didn't so नहीं Nasdaq R1 हुआ नहीं ऊपर जाना है ना निकल रही है ना Nasdaq लेवल 2 पे R2 पे बैठना है R2 को देखना है कि कितना स्ट्रांग है लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा 700 से बहुत अच्छा ट्रेड फुल 5 माइक्रो 700 पता कहाँ रखे हैं आप मैं आपको बताता हूँ अगर प्राइस चली जाए ना 735 तक 35-40 के दरमियान ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनेगी तो रेजिस्टेंस सॉरी ये आप ऑर्डर पहले लगा देते ओ पहले लगा सुपर नहीं चार्ट के अंदर तो चार्ट अगर मेरी आप कल की वीडियो देखेंगे ना मैंने बुल नॉक्स पे लाइव पीए पे ट्रेड लिया ठीक है दिखा के कि ये ऐसे मेरी प्लानिंग चलती है तो वो वीडियो आप चार्ट पे पहले लगा देता हूँ पहले क्योंकि सर आखिरी वीडियो यूट्यूब पे आखिरी वीडियो हाँ सुबह ये देखें ये मिड बैंड भी ब्यूटीफुल चल गया आपके कुछ पॉइंट ठीक है नो प्रॉब्लम नीचे का लॉस आपको पता है यार कि मैंने मैक्सिमम 250 है $250 नहीं $200 4 पॉइंट मैक्सिमम या $20 अगर आपने वो लिया हुआ है माइक्रो ले गए जी ऊपर अब ये कैंडल सीधी जाके रुकनी है आपकी अब साथ साथ टाइम आ रहा है जी आप लोगों के पास 10 मिनट हैं जॉर्ज की जॉब्स ओपनिंग के सो यहाँ पे मिड बैंड क्या है यहाँ का मिड बैंड है 27 वो टच करके चली भी गई हाँ निकल गई है जी निकल गई आपने इस बार में सर 700 पे लगाना है तो 700 पे 700 से 740 है लेकिन 40 पॉइंट का गैप देखें तो उस लगा दें अभी ऑर्डर लेकिन उस वक्त हम 60 मिनट की स्पीड देखेंगे कि किस स्पीड से जा रही है ऊपर फिर हम उसको एडजस्ट कर देंगे 700 या 740 पे 720 पे रखना है हाँ अभी के लिए 700 भी रख लें अभी यहाँ से 500 का फर्क है अभी तो बहुत बड़ी गेम है ये थर्ड मिड बैंड भी चल गया जी थर्ड मिड बैंड भी चल गया जी आपका 100% इवन दो डाइवर्जेंस की लाइन आ रही थी उसने थर्ड मिड बैंड भी आपको 100% चला दिया अरे नहीं आगे सबसे हर तरफ सीटें वेलकम जी सो अंटिल 42 इट्स ग्रीन मिड बैंड ठीक है क्योंकि R1 और S1 के दरमियान है यस 3 मिड बैंड $50 each if you took 50 each you're done your target by 9:52 8 minutes to go guys news just keep an eye on the news Nasdaq wants to really push at this speed. The candle is going to close in 8 minutes and
15-minute candle, 30-minute candle, 60-minute candle, and 10 o'clock. 4 बजे, 8 बजे और 12 बजे वाली कैंडल क्लोज होगी 2 घंटे बाद. सेल नहीं करना यहां से, बिल्कुल डोंट सेल. दिस इज ग्रीन जोन राइट नाउ. आई मीन Nasdaq is pushing hard. 548 तक तो चली गई थी. सर R2 की अपर रेंज रखिएगा रिस्क में. देखिए 580 से 56 है, तो अगर ये पुश कर गई ना 10 मिनट में, तो क्यों न्यूज के पहले ना कीजिएगा, क्योंकि ये अगर 600 को तोड़ गई ना, देन ये पागलों की तरह 700 पे जाएगी. So what I just said, that Nasdaq, the gap is so little, time is so little, so वैल्यू एरिया मैंने अभी देखा नहीं. एक सेकेंड. पिछले दिन का वॉल्यूम है ज्यादा कहां पर? ये पिछले दिन का वैल्यू एरिया ना. Nasdaq का वैल्यू एरिया, इट्स difficult to see except 240. So दोनों slightly out of sync हैं. So एक डब्बे से निकल गया, एक अभी पहुंच रहा है. तो मुझे लग रहा है कि वो R2 पे जाएगी तो ये R1 के अंदर आ जाएगी. तो अभी यहाँ से मैथ का गैप. इट्स इंटरेस्टिंग मैथ. इफ यू लुक एट Nasdaq got to, कि Nasdaq को कितना टाइम चाहिए जी? 600 minus 500, 50 point divided by 7. So about 7 to 8 point in ES. So if you look at 34 plus 7, same 41, 42. So when ES will go, Nasdaq will go into R2, your ES should be inside R1. There you go. Anybody who took a long trade and is trailing on every midband, you're done. 3 midbands are, like this trade was $500. But minus the bottom of the bar, so 430. If you took your first midband, second midband, third midband, you are done for the day before 10 o'clock. Or if you're waiting for an area, so Nasdaq I'm waiting for R2 and ES R1. Okay, touch the value area of yesterday, and it's ES का 60 मिनट का वैल्यू एरिया टच हो गया जी. 35 से बाउंस डाउन हो रही है. So computer is suggesting right now that if you want to buy it at 34. If not 34, buy it at 30. If not 30, buy at 29. So 3 orders can be executed. If you bought it at 34, you're done. Your trade is done. That's first, because bottom of the bar and 1 point already got. So computer is, when your both charts are green, you have 3 entries live. First is 34, second is 30, third is 29. So computer is saying everything is green, you should sit at the bottom of the bar. जाना चाहिए कोई. मैं जरा 29 पे लगा दूंगा अगर, क्योंकि थोड़ा सा ओवर बार्ट हुआ है ना, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर उसने रिट्रेस 30-20 पे ली. Guys, just be ready. 4 minutes. Don't be in any PA trades, please. EA you can be, no problem. PA trades, they're not gonna accept that money. They'll accept that trade, but they won't account towards your. Really? So when news time They don't, because then that's gambling, right? Okay. You're like, close my eyes, make $600 now. So they say 1 minute before, 1 minute after, you're not entering. Okay. So if you took at 34, you already got your 2 points and you're done. Yes, it's not going to work for that. No, don't know. Any, because the only thing news truly doesn't affect is gold. Okay. Because crude oil has inventories, natural gas has inventories, business inventories in manufacturing. So gold has a
universe of its own, right? And as he says, always buy. Don't go short on gold. Eventually, you will get make money. So the first trade in that candle is finished. If you took 34, bottom of the par, you're done. Next is 30 or 29. 29 is the, there you go, guys. We are getting some shock waves. So 2 minutes to go for the news. Job openings. And 1 minute, 44 seconds to go. It means how many jobs are available in the market. More jobs, good for economy. So market should go up. Good for the currency. So they're expecting 801 million, 8.01. Let's see which way it goes. Previous is 8.10. 1 minute and 14 seconds. And same thing as factory orders. Less factory orders means bad, meaning that people are not holding their, because there's no tariff that got implemented anyway. So this is nothing to do. So 58 seconds. No. Chinese, I think they didn't even have a date. He just said 10%. So yeah, now there's a bit of a. Gold is a government agency or Sorry? Gold is Huh. a government agency? US agency? US. It's everything is US. Yeah. All right, 33 seconds, guys. Bad numbers versus good numbers. Let's see. 22 seconds. By the time the audience will hear it, news will have gone. All right, let's see which way it goes. Another bottom of the bar worked. There you go. News looks like a good news. It's shooting up. Maybe a spike. We are in R1. And Nasdaq is in R2. Like you, the last voltage is also low. 7.67. So computer predicted the area and our area worked. Guys, anybody took any trade from EAs? EA accounts? It's okay, no problem. So area worked, R1 worked 100%. And I took the area from R1. I took approximately in my EAs at 40, where did I enter? 43. So R2 is done for Nasdaq and for ES. R1 is done. Congratulations if you took that trade. So let me highlight it. Now for what's left on the table is R3. And for Nasdaq and R2 for ES. Let's see. This mid-band worked as well. So far it's giving us a point. Now we can enter and trade. Yeah, no, not in. If you didn't take it the first time, you missed that boat. So the idea was computer was saying buy it at 38. And if you didn't buy at 38, you missed that train. What about the like 30-20 mid-band? वो भी दूर है, पहले वो आया नहीं. So far this mid-band worked as well, even coming from an area, and area itself worked. Congratulations. Just follow along, guys. That's it. And EA doesn't care about news. They don't care about it.
So I know somebody who trades the 4.75 candle. I'll explain you slowly new things. You know, right now it's not giving you higher high, it's giving you a lower high. So what does that tell you by theory? That trend will now start to go into lower low, right? Some users will enter from that number minus 4.75 and then they'll take a few points from there. So that's a bit of a risky trade, but still it's possible. So Nasdaq got to 606. R2 is done. Congratulations. Our computer areas that computer predicted early 100% so far this year for Nasdaq and ES. Take profit में कितना बना? Not much. GP जो एरिया डन हो गया, R1 डन हो गया जी. 2 टाइम उसने टच किया उसको, पहले एक दफा फिर दूसरी दफा. तो मैं एरिया तो नहीं ले रहा क्योंकि नैस्डैक अगर चली गई एक्सपेक्टेड हाई पे तो फिर ये निकल जाएगी R2 की तरफ. हाँ, लेकिन वो पहली अटेम्प्ट में लेना होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट. एरिया सा तो वो 5 में से एक कंडीशन. देख पिछले 3 एरियाज, एक डाइवर्जन वाला भी 1 और एक सिर्फ कंडीशन थी डाइवर्जेंस. तो ES is in divergence 15-10. Price is going up, strength is not going up. What are the numbers first? Let's look at the numbers. Much less jobs opening, much bad, so it's red. And factory orders are down as well. So that doesn't look good for the economy. Not too many people are getting offered in job market. And so R2 may be a strong resistance whatsoever. But let's see. So it's broken your this thing. लेकिन एरिया पहले हो जाए क्योंकि अभी 30-20 severely overbought है. 30-20 को थोड़ा सा वो चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए. वो एरिया पे बाउंस हो रही है. लेट्स सी. अभी तो बॉटम ऑफ द बार एरिया में खड़ी है. नैस्डैक डिसाइड कर रही है which way it wants to go. फिर भी मिड बैंड से 2 पॉइंट देगी आपको. ब्यूटीफुल. लेकिन डाइवर्जन आ गई है तो इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्की ट्रेड इस मिड बैंड के बाद. लेकिन देखें ये 30-20 ओवरबॉट है और अभी ES जो है ना R2 में जाना चाह रही है, वो R2 में चली गई है. तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों वो खेलती रहेगी R2 में, इसको R2 में ले आएंगे और फिर वहां से दोनों, क्योंकि अभी नैस्डैक कोशिश कर रही है R2 को तोड़ने की, लेकिन वो कह रही है ये पीछे ज्यादा ना रह जाए, तो needs to bring it to R2. So these will come, both are in sync क्योंकि 75 companies दोनों के अंदर है. So what I will translate that. What I meant is Nasdaq has gone into beyond R2 and it's trying to break it while
ES wants to truly, so my orders are sitting at R2 right now for ES. There you go. Again, yes, R2, anything after, because by now, so where would that put my ES? Let's add, quickly, sorry, add my Nasdaq. So 10 points here, that would make 70 for Nasdaq. So 620 plus 70, 690. So look at very perfectly. So 6 थोड़ा सा आप क्रोज, अगर वो 700 पे गई तो ये अपर रेंज में चली जाएगी 60 तक। नहीं 53 का फर्क ही है ना, तो 3 का मतलब है 7 या 21, वो भी 700 में, और ये आपकी पहुंच जाएगी 58 तक। हाँ, so 69, yeah. So night session R2, because R2 on ES is where my eye is at the moment. But along the lines, 5 mid bands came, and area came. So beautiful, smooth trading, smooth sailing so far. Not a single stop loss got hit for me. All right, let it climb. So if anybody is taking a mid band, they're trailing. इसमें 60, 42. So we're waiting very close, guys. Nasdaq is 60 points away from our target, and ES is 52 to 5. So 60 divided by 7, exactly 8 to 9 points. Very. So इसलिए R2 is a good reason. R2, हाँ जी, R2 ES में बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उन्होंने मॉर्निंग में कह दिया था हाई टू गो लो, R2 की तरफ से आप लें, सर 57 जाता है, 57 to 60 सेल लगाना है सर, सेल लगाना है ES में, इसमें 57 ले लें, 58 ले लें, अब वो कहाँ से बाउंस कर जाती है we're not sure. वो यहाँ से ही बाउंस कर सकती है, लेकिन because 30-20 is severely overbought. So whether it will go for, but if it goes to 56 and stops and comes back, don't take 57 then go a little higher. Because Nasdaq has full throttle. Nasdaq still have 15-minute candle, has still 4 minutes, 30-minute candle has time, and 60-minute candle is your आपने 55 पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं सर सीईओ से ऑर्डर आ गया R2 का, तो एक पॉइंट भी नीचे नहीं, मैं नहीं सर्कल से बाहर आ रहा, नहीं मैं 57 पे हूँ ना। So now it's between R1 and R2 for ES. Nasdaq maybe wants to get some liquidity, come down and push it up to 700. Because for 50 points, Nasdaq can do that in one swing. So Nasdaq, you guys got to watch out 700, and then ES 57 to 60. There you go, bottom of the bar trade. So computer said take 51, and you took a point from there. So the first entry is always bottom of the bar, if you like. Some users don't like bottom of the bar. So second entry would be 47, and the third entry would be 47, because that's the mid band of 30-20.
हाँ 45 के करीब है, तो 45 42 जो भी आपको लगे। अब नैस्डैक थोड़ा सा ना मोमेंटम इकट्ठा कर रही है स्टॉप लॉसेस हिट करके, और अगर ये यहां से अब चढ़ गई एंड इट विल टेक यू बैक अप। मिड बैंड वर्कड अगेन इवन आफ्टर डाइवर्जेंस, सो मिड बैंड से there you go, almost a point I saw. From 48 to you're done, your point and a half almost, because Nasdaq has created enough liquidity now. I hopefully will go to 700. Still no selling. My order is sitting at 57. So there you go. 2 points are done for ES for mid band. It's green. We're buying. We're buying. Not selling until the area. Let's see if R1 becomes a good support. I know it's tempting to take a trade here, but I'm not going against the color whatsoever. Because it could shoot up to the moment I enter to sell, thinking it's time, it's overbought 99.59%, and it can shoot up inside R2. And then I'm like, why did I buy? So never go against the color, please, please, until it's in the area. So again, this mid band worked, and coming in a smooth market, you have 4 mid bands that worked, $50 each, $200 target done. On my Apex account, I'm up $325 and per account, and take profit $112 per account. So I gotta take one off the copier because one is done. 2.5 is done, so I will put it 2.6. 2 or 3 is good as a leader. All right, I'll remove one from the copier. That's see, Legends is only $70. I gotta make 80 more to qualify to 150 per day. That's a nonsense rule, honest to God. This even Apex has $50 rule, but this is completely annoying. That's a retracement divergence. The price is at mid band, and BBs are all messed up right now. Again, from the mid band, it gave you 2 points in the next bar. Beautiful trade from the mid band. Your bus stop does not ever change, always at a mid band price. Put in ATM, 4-point loss, 4-point profit, it's up to you, but your order position never changes. Nasdaq और ES आपस में देख रहे हैं जी किधर जाना है. Retracement divergence means price comes down, BBs don't move at all. So that's called the low of the bar, top of the bar. So that's the technical name for it. Retracement divergence.
BB is in within the bar. It's so that's the technical word. Every time low of the bar you take, that's called the retracement divergence. How many mid bands since how many? 1, 2, 3, 4, 5? But really, how many worked? Let's look at 1, 2, 3, 4, 5, 6 mid bands worked going up. So 6 times you take 1. So our philosophy doesn't change, theory doesn't change. So, is it trailing is good idea or taking 2 points? So दोनों अपने अपने फ्लेवर्स हैं आपको. जिसने ट्रेल किया वो आज खुश है, राइट? उसके एक ही ट्रेड से निकल गए थे, राइट? कुछ लोग प्योर एरिया टू एरिया करते हैं, वो कहते ही नहीं है कि मैंने निकलना है. सो वो R2 पे बैठेंगे ना, तो जितनी मर्जी स्टेप्स आए ऊपर, वो R2 से R1 पे निकलेंगे. जो R3 पे बैठेंगे ना, देखिए R3 पे भी आएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, नीचे तो नहीं है कि एकदम आ गया. तो वो हर I know a trader personally, R3 से स्टार्ट करेगा, हर रिट्रेसमेंट में एक लॉट बढ़ा देगा. एक मिनी से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग का नीचे आई, जब मिड बैंड पे गई वहां एक मिनी और डाल देगा, अभी भी प्रॉफिट में है. हर रिट्रेसमेंट में एक एक मिनी डालता जाएगा अपने एरिया तक. So there's different ways of for you to trade, right? So there you go. So we are very close to your area, guys, for R2. So test that on sim, area to area trade. Make 10 sim accounts. It doesn't cost you anything. And then आ गई सर, आ गई मेरे ऑर्डर के अंदर आ रही है. उधर अभी नैस्डैक में थोड़ा सा रूम है, नैस्डैक में 40 पॉइंट हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर हूँ. एरिया से हो गए जी आपकी पॉइंट. मेरा 57 से उसने मुझे 2 पॉइंट दे दिए. अब मैं ट्रेल कर रहा हूँ जी. अब ये एरिया खत्म हो गया. एरिया खत्म हो गया जी, एरिया डन है. फर्स्ट अटेम्प्ट हिट हो गई मेरी. हाँ नहीं आए ना आए, हमने अपने 2-3 पॉइंट लेके खत्म कर दी गेम. एरिया की ट्रेड खत्म हो गया जी. मेरा बॉटम ऑफ द बार पूरे उसने 10 टिक्स दिए. 57 में एंटर हुआ था, 54 पे मैं बाहर आ गया, 55 पे एक्चुअली. आप स्टिल ट्रेल कर रहे हो, वेरी गुड. दैट्स इट, आई एम डन माय ट्रेड फ्रॉम द एरिया. R2 is done, guys, from ES. हाँ मैंने 57 से मेरा ऑर्डर डन हो गया. 6 टिक्स का मतलब है पॉइंट एंड हाफ, राइट? अब कुछ ट्रेल करेंगे R2 से, लेकिन उनको बैठना पड़ेगा ट्रेड में 20 मिनट 15 मिनट. अब देखिएगा ये अगर ये जा रही है, देखें 51 तक तो आ गई है. जितना आप बैठेंगे ट्रेड में उतना आपके लिए बेटर है. नहीं वो ठीक है, वो रिट्रेसमेंट लेगा 48 तक. तो कुछ लोग 48 तक ट्रेड में बैठेंगे. इट डिपेंड्स कि नैस्डैक कहां से आ रही है जी. नैस्डैक आई 63 तक. अभी नैस्डैक में अभी गुंजाइश है एक्सपेक्टेड हाई पे जाने की. तो ES अभी जिसे कहते हैं ना, मोमेंटम नहीं दे रही नीचे आने का. But first attempt on the area, our computer predicted that today, if the market goes up to your resistance level 2, from 57 to 60, it will bounce down. And so this is called the 100% winning rate in 2025. And we have a 90+% since 2008 in this office. So that's what we say. We are not selling you a course. We are giving you a software that very easy to use and predict, and just follow what the software says. Don't use your own brain, man. I never do. Computer says 57, I never guess. If it's green, I'm not selling. Where I did sell was 57 because computer predicted that resistance, that's like a roof, right? At this time, it should go down. It can still go up, still can go all the way to 90, like the night session high.
But computer said by now I should give you a bit of a break. So what you guys learned in the support and resistance levels. So R1, R2, R3. So R2 bounced down a little. So far it bounced from 57 to what's the number it came to? 52. There you go. Anybody who's trailing is truly has enjoyed 7 points, 5 points from this trade. All right, I am done. Legends, great. $28,309. Started at 25,000 and now I'm at 28,309. My 10 days are over. Tomorrow I'll apply for my payout. And then my account is still alive, so let me shut off Legends. What is next? Next is take profit. I have qualified for out of 5, 1. Let's do 4 more at the next area. Apex, I am up $425 per account times 20. Still, that midband has not failed, by the way, because it fails at 8.5 or 8.75, 8. Sorry? Sorry. There you go, guys. So majority should be done now. If you are not or you missed it, that's it. It is what it is. 30-20 is taking a breather now. मेरा ख्याल है Nasdaq को अभी ना है अभी बहुत टाइम पड़ा है गेम बहुत बड़ी है 4 बजे इनिंग्स खत्म होनी है राइट तो अभी 5 घंटे पड़े हैं और आगे अगर कोई अर्निंग्स है आज किसी की अर्निंग्स नहीं है नहीं आज गूगल है जी पोस्ट अर्निंग आज जो धमाका होगा कल हमें मार्केट में नजर आएगा $1 ट्रिलियन की कंपनी है जी आज गूगल है और कल परसों टोयोटा वर्ल्ड डिज्नी ठीक है यार लेकिन आप 4 के बाद 4 से 5 के दौरान अमेज़न की आ रही है थर्सडे को तो ये ट्रेन भी पीछे आ रही है If anybody got the AstraZeneca injection like me, they're going to do their earnings on Thursday. So next game is Google tonight. So Microsoft is done, Meta is done, Tesla is done, Apple is done for the last quarter. Now 2 major important companies are your Google and Amazon. When is NVIDIA going to speak? Next. NVIDIA is doing 26th of February. That may not be looking so good because of the Chinese. OpenAI came and said, it is what it is. We're not going to sue them. So now they have to compete. But they may not get $500 billion from Trump for their new AI project, right? So let's see. I have a feeling Elon has something to do with DeepSeek because, they kicked him out of OpenAI. They kicked him out everywhere. No, he's developing his own. I know. So I have a feeling because how similar it is with the Elon maybe doing a backdoor deal with China and say, hey, let's release this because they don't like the OpenAI guys, right? So Elon could be a sneaky little guy and actually funding DeepSeek altogether, right? So because remember, if NVIDIA needs to send the chips, they can send it to a proxy country and go to China, right? These days, trade wars can happen. So I still remember selling those boxes coming out of China. Canada put a tariff on for us. And Canada said, you bring this box from China, we're going to charge you like 23% tariff for this and that. However, if you assemble it in Canada, there's no tariff. So Bell Canada brings the boxes from China and they just left one piece out. One piece just shipped separately. And then there was no tariff. So that's 23%, right? So there's always loopholes within the tariff wars. I've been importing like last 20 years, different product, just by changing the design slightly and shipping it different, you can avoid so many tariffs, right? So
Especially in electronics, there are so many tariffs that you can just say, hey, it's assembled in Canada now, because we had a back plate made in Canada. So Same thing China is doing with Mexico. They are Yeah. sitting here, And they are then- handling one part, two part, and then shipping to the US. we manufactured satellite dishes in Turkey. We went there. Now, Turkey falls into Asia and Europe. Interesting. So we came into a dilemma that we said, all right, because back then, like 20 years ago, or at least 15 years ago, there was big satellite everybody, and they were doing a better quality. Long story short, we made it in Turkey, in the Asia part, but we were able to write made in Europe. And that makes the quality. So just by that one bridge, little bit of Istanbul is in Turkey. So How does it work, the IPT? so Folks, they- have to have a subscription. no. So all of these guys who are giving you IPTV boxes, they are restreaming, and they're like breaking the Copyright Violation Act. So Somewhere they have so they have a head end, so a live account. So I did that for 10 years, and Dish Network sued me. They came and they sued me, and they said, "You're broad." I said, "I'm not the one putting the software. I wrote the software for restreaming." So Dish came and we fought, and I said, "Hey, I'm not the person who take the channel and broadcast it, but I wrote the software. Software is free. You can go download it right now." But so that's how the streaming works. So if you're watching CP24, they have taken a box from, and so these are called head-ends. So they would put one head-end, just like a hotel system. They have one hotel system, and then in every room there's just a device that's doing it, right? So it is illegal. Yeah, it's a civil lawsuit, but it's Let's say difficult. it's 100 channels. They have to have 100 boxes. or Yeah, one these channel? days it's much easier. What happens is they buy one subscription on Bell, and then they restream theirs. So because Bell has IPTV2, Rogers has IPTV2, so what they're doing is they're taking the link and then back 5-10 years ago. Yes, every channel you needed to have a decoder and an encoder. Yes, and then they were restreaming. But today, there you go, guys. We are coming from R2 big time. So that's a lower high thing. Black candle form, you got your thing and you are done. Now 30-20 mid-band is being tested, guys. So if you were thinking of buying 600, क्योंकि Nasdaq ने 600 तक आना है, 600 तक उसकी सपोर्ट बन सकती है, और यहां पर इसकी सपोर्ट R1 बनेगी, ES की. ES आपका 45 से 42 बनेगा. लार्ज ट्रिगर्स टर्न अराउंड हो रहे हैं, बॉक्सेस आ रहे हैं, तो आप 30 से लें, 42 से लें. 42 is a good number. 42. Buy or sell? Buy. Because it's coming from R2, so R1 will become a support, right? Now it depends if Nasdaq bounces from 600. If Nasdaq bounces up from 600, then we would be looking at a good support on R1 for ES. Because now it's coming from roof, bottom is your support, so that's R2, this is R1. So it's coming from there, it's gonna, whether it will go through it or it will bounce back up, that's the thing. We can buy it from 42, but still put your stop loss, right? Pressure is down, so he says high to go low. That's a better strategy, or low to go high, expected low. In between things can, because right now your 30-20 mid-band worked. So when computer was saying buy it at 48, you took it at 48 and you're done. And now it will make a divergence on 30-20 if it breaks 6057. Let's do a bit of a quick math for ES. 650 minus 740, that's 90 divided by 7, 12, 13 points from here. So 6053 plus 13. So guys, 6066 is your safe entry. If Nasdaq goes to 740, don't enter at 6060, but because 6066 would be a better entry for ES for selling. for selling.
because Nasdaq would have gotten an expected high, which will put ES into your. So how did I come up with the math? I can give you a public right now. The price is 640. What is our number? 740. That's 100 point in Nasdaq. You take that 100 point, divide by 7, that'll give you about 14 points different in ES. So you say, I want to sell. From which way I should be a good number to sell? So computer is given you a number. Sorry guys, this phone is not supposed to ring. No. So computer is giving you a number from 57 to 60. 57 is done, right? 60 will create a divergence, but 66 would be a good safe number. 66, 65, 64, above 60. Because I'm just seeing if this candle, how long the candle has to go, still have almost 27 minutes in that 60-minute candle, and it can push back up to 700, very close. So almost. So last kitna gaya ji? 53 tak gaya na? 653? Yeah, 650, 663. But that's a night session high too, right? Usually they test it. For little, 663 so far. 200 point Nasdaq has moved. So for Nasdaq users, you should wait for 700 to 740, and for ES, you should wait for 66, 62, 63. Let's see. Because 3020 is having hard time right now. Because large triggers are magenta, green triggers are twisted. It made a lower high, so it's not liking what it's. It may not go to expected high on Nasdaq, but hey, we don't enter Nasdaq except areas. So how is the market up? So far, it's up 241 points, Nasdaq, and ES is up 31 points. So we are not selling until the color changes. When is Murtaz going to Zoom? Most likely, what is today? Tuesday, Wednesday, maybe Thursday, maybe tomorrow. We just ordered a corporate laptop for him because Zoom requires a commercial license for doing it more than 250 users. So, by the way, that was a retracement divergence on 1510. If you took an ES midband, none of those moving averages are moving in the bottom. So I know in the slow market, the biggest problem is waiting. Don't enter it. You would enter, it would go south. You would go long, it can go short. So do not sell. I'm just waiting for the price to make a black candle. So 6055 minus 8.5. 6055 minus 8.5. 6046. Let's see. From lower high, minus 8.5 will be a black candle to the downside on your after lower high on ES. So if you look at ES, so far it's 6055 minus 8.5 will be a black candle there. That means price is planning to now change direction. You know, the first class you guys saw higher high, higher high, higher high, and then there came a lower high. Then you're like, oh, this is my sign that I'm going to now go in the other direction. If you look at 3020 right now, it is showing a higher high, but the next is a lower high. It's not going up yet, right? So if it breaks 57, you have a divergence. If it makes a black candle to the downside, you have a trend change. If it goes to 66, then so I'm calculating like a chess player every possible move.
If you took this mid-band, that passed as well. So price came to the mid-band and now you are trailing. And get into the habit of even a sim account, auto trail. Every day test auto trail that, hey, I'm not gonna touch, I'll just put in my order. Because even don't worry about real account, but that video on, you should know is, hey, oh, it's working, what it's supposed to be doing. So what would have happened on that trade is you would have entered at 51, at 53.25, it would have started to trail. And now it's trailing at the bottom of the bar at around, at break even. Right now it's break even. So Nasdaq, I'm still waiting to get to that area, high to go low. This is what we're planning. Eight or nine concepts are there, guys, nothing much. There you go. If you bought it mid-band and it would be trailing, your 52 order, you are locked 2 points. I don't know how many people took mid-band here. So now if you look, there's a bit of a divergence. It made a double top on 30.20. Nasdaq, इधर लगा देता हूँ आप लोगों के लिए ES, ताकि मुझे explain करना easy हो जाए board पे. So what's this number? If somebody can read, my glasses. 57. What's this number? 57. If this is this, right? This is the strength right here, right? So let me put it on to the board. All right, 30-20 chart, green, 57 would represent 57 would represent 57. 57, hey, your BBs did not go up, moving average, and then your strength did not go up. So that is telling me there's a possibility I could do a reverse. Possibility. So divergence is starting to be made. But if the time extends, so it has to happen in certain, so, but if you took this mid-band, this is beautiful trade going up. And anybody who wants to challenge mid-band trades for today, let's look at how many we took. At least I would say true mid-bands were happening at first one, happened here, one mid-band, two mid-band, three mid-bands, that missed, four mid-bands, five mid-bands, six mid-bands, and seventh mid-band. So 7 times 100, 700, you lost 250 or you lost 200, you're still walking away with $500. But do click and take an entry. Don't just, so your next entry is this. Computer is saying, buy here, or here, or here. These are the 3 entries in green. Bottom of the bar, mid-band 30, 15, 10, or mid-band 30, 20. See, every mid-band has the, देखिए हर mid-band का कोई गारंटी नहीं है कि उसने चलना है या नहीं. मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि ये डाइवर्जेंस मेरी आई ये देख रही है कि ये अगर यहाँ ब्लैक कैंडल बन गई ना, तो मैं यहाँ से -8.5 पे शायद एंटर ही कर जाऊं सेल में. ये नंबर मैं क्लोजली देख रहा हूँ 6058 वाला. लेकिन नैस्डैक में बहुत थोड़ा रह गया, 25 पॉइंट रह गए. तो 25 से 30 पॉइंट 50 भी लिख लें सर. 680 पे तो आ गई है, 680. अब आप 700 पे आपका ट्रेड शुरू हो जाना वो वाला. एंड वी आर इनसाइड R2 अगेन. लेकिन नैस्डैक में भी टाइम है जी. नैस्डैक को आप दें. सो नैस्डैक लेट्स से 730 minus 680 50 points divided by 7. So 7 points from here for ES. 6058 plus 7. Again, 6064, 63, 6. Let's see which way Nasdaq wants to go. It still wants to push up. So computer is saying buy it either. So first entry could be possibly 55. Next entry is at 53, or next entry is at
51. So 3 entries, you would decide your risk. Nasdaq is only 20 points away from our highest point of the day. So it got to 575. Sorry, I should say it got to 678. 680 is kind of done. And Nasdaq is up. So high to go low is our plan. Let's see. Let me change my properties in columns. I don't care about seeing a lot of these things. Buying power, don't care. Excess cash. Mission margin, intraday margin, none of this matters. Net liquidation, cash. Okay. So if you had taken the first entry, that is at 55, your stop loss hasn't hit yet. If it goes to 56, your bottom of the bar trade is done. None of those moving averages moved at all. There you go. You got your point. So 55 trade worked and got a point out of it. So 6058 minus 8.5 is 6050. But where would be the trend change? 6051 minus 5. 6046 would be my trend change. Nasdaq 680. ठीक है, वहां से वैसे मिड बैंड वहां से कलर नहीं चेंज हो रहा, 4-6 से हो रहा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि कलर चेंज होना है 51 माइनस 5 से 30-20 का. सो 6051 माइनस 5 ये 46 ट्रू आपका डाइवर्जेंस को कंफर्म करेगा. तो वो 3 पॉइंट है, वही 3 पॉइंट लेने होते हैं क्योंकि अगर उसने ब्लैक कैंडल वहां बनाई और वापस चली गई, क्योंकि नैस्डैक के बाद फिर भी 740 की जगह है. हाँ, अभी तो बड़ा गैप है. तो फिर अब आप वहां से लॉस देखिएगा 6066 माइनस 6049, तो अपने आप को 17 पॉइंट का गैप दीजिएगा. So your true entry should be where the divergence is confirmed. But only my issue, look at this, even strength is not going up, but your BBs have kind of caught up. Not BBs, MACDs. This was a gap trade. It didn't touch mid-band quite yet. So Nasdaq is trying to just create some liquidity in the market, hitting stop losses. Anybody who's going long, Nasdaq came down, hit everybody's stop orders, and now it will go back up to the 740 zone. And because everybody who's going long has a stop loss, right? And Nasdaq's, oh, I see so many stop loss. करना तो चल गया नहीं चला तो स्टॉप लॉस गारंटी किसी की नहीं. लेकिन मुझे डाइवर्जेंस नजर आ रही है 30-20 में. अब 8.5 पे ब्लैक कैंडल बनेगी, वहां पर ऊपर एक लाइन आनी चाहिए अगर स्ट्रेंथ की डाइवर्जेंस हुई तो. लेट्स सी. आ गई जी, ऊपर लाइन आ गई. ठीक है जी, कैंडल बन गई, सब कुछ हो गया. डाइवर्जेंस अब कंफर्म नहीं हुई कभी तक. डाइवर्जेंस नॉट कंफर्म्ड येट. It will get confirmed that 6051 minus 5, 6046.
लेकिन विक्रम भाई अगर सिर्फ ये देखिएगा कि 40 नहीं मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 4-6 पे भी अगर आप एंटर हुए ना तो आगे नीचे सपोर्ट खड़ी है R1 की, तो मैं डराई जा रहा हूँ आपको। आई एम जस्ट लुकिंग एट एंड देन गिविंग यू द लाइव एनालिसिस। देखिए मिड बैंड चल गया जी आपका 30-20 का, राइट। 60 अगर आप पहले एंटर हो रहे थे 50 से 49 से, पहला 49, ठीक है, अभी वो हिट नहीं हुआ था, लेकिन 30-20 mid band 100% worked and gave you at least a point so far. Anybody took? आपने ले लिया? सेल तो है ही नहीं है जी, सेल कहीं पर भी नहीं है, सेल है तो 6066 से, क्योंकि अब ये जाएगी वन मोर टाइम, डाइवर्जेंस फेल हो गई है, मिड बैंड ने उसको सपोर्ट दे दी, वापस जा रही है। अभी तक तो अब कैंडल तक वेट करूंगा, उसके बाद मैं जजमेंट दूंगा। नैस्डैक अगर तो सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने आई है तो ये अब जाएगी सारे स्टॉप लॉसेस हिट करके 740 तक, या 700 तो जाना चाहिए। By the way, if you take a 15-10 mid band, you still made money because it didn't give you a black candle yet on 30-20. But that's a break-even trade. I was explaining yesterday. If you're recovering from 9 points, you see zero or as close to it, get out. That's your chance to giving you an idea that, hey, I will get out. Right? So 15-10 will still give you an opportunity to exit at a trade at very close to break even if you put your stop loss at 9. So you took that mid band, you had a stop loss at 9, and you got out actually with profit this time. Congrats. हाँ जी, नहीं सर, वहां से 18 पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप है, 20 टिक्स है, 18 है ना पॉइंट, तो क्योंकि वो 18 के बाद जाके कहीं चेंज होती है, वो फिर बड़े अकाउंटों वाले हैं, वो छोटा तो आपको। अब नैस्डैक घूम रही है, ये अभी भी मुझे सेल में नहीं जा रहा, मैं जब तक 42 से नीचे आएगी तो मैं सेल में जाऊंगा, नॉट पहले नहीं, क्योंकि 42 का सपोर्ट है कि नहीं, 42 इज माय सपोर्ट राइट नाउ, so until 42 breaks I'm not going in selling, because I have to look at it as a support. Because any given time Nasdaq could shoot back up from here and then take ES with it. I think 46 break करेगी तो नीचे जाएगी। सर 42, क्योंकि एरिया है ना, R1 है, S1 और R1 ये एरिया है, सारे एरियाज हैं, R1, R2, S1, S2, सारे boxes, support and resistance, right? So what I'm analyzing right now is your area is 42 to 45 for R1. So if it goes below 42, then yes, I can see a heading towards maybe S1. But सारे रहमो करम है हमारी नैस्डैक पे, तो नैस्डैक को जाना चाहिए 700 पे। Then mid band on 15-10 did not, you had to skip two conditions. One chart is still green, one is red, and you had to skip a condition of higher low, because the theory set must be coming from lower low, right? So out of 5, you kind of ignored 2, and you took a sell, and you still made money.
And the सबसे मुश्किल काम इसमें बैठना है बाहर, ट्रेड से बाहर सबसे मुश्किल काम है. That's what I'm doing. It's okay. No, sir. ये मेरे दूसरे in my other office I had a treadmill. Yeah, man, might as well burn some calories, right? So yeah, so because my setup is computer is saying a good number would be 73 to 83 for ES. A good number would be 700 to 740 for Nasdaq to sell. But so it touched the area third time R2. R2 बहुत strong बन गई जी उधर. इंसान कहेगा यार बहुत नीचे ऊपर नहीं जा रही, मैं यहाँ से सेल डालता हूँ. आपने सेल डाल, कोई डाल दे यार सेल, हमारी तो चली जाए ना ऊपर मार्केट. जिसको बहुत हो रहा है सेल डालने का वो डाले तो आके उसके अगेंस्ट जाएगी, हमारे फेवर में चली जाए. मैं भी उसमें चाहूँगा. ये आप हमारे से अकाउंट ले लें, एंटर हो जाएगा वो के पास जी. क्योंकि अगर आपको ये फीलिंग है कि आपके एंटर होते ही पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाती है, तो फिर आप हमारे से, क्योंकि एटलीस्ट 90 का तो फायदा हो जाएगा 100 में से जो बैठे हैं. That's not the right theory by the way. अगर ऐसे होता एक को हम सैलरी पे लगा देते, 90 कहते भाई आप ट्रेड डालो, सारों के ऊपर जाएंगे. हाँ एग्जैक्टली, उससे कहो देखो मैं ट्रेड डालूं. यार मेरी किस्मत ऐसी है, मैं ट्रेड डालता हूं तो प्राइस ऊपर चली जाती है. उसका कुछ देखे नीचे इधर डाइवर्जन थी, अभी तक 30-20 का मिड बैंड नहीं ब्रेक हुआ. Nasdaq लिक्विडिटी तो क्रिएट कर आई है, 2-3 इसने स्पीड ली ना तो ये 700 में घुस जाएगी. देखा ना, आपने सेल डालना होता ना कि यार हो गया सेल और वो चढ़ गई ना, तो सेल के नंबर्स हैं. सेल आई एम टेलिंग यू, सेल 66, 64 और मे बी 73 अदर हाई नंबर. या और 42 के बाद अगर सेल डालना है तो 42 के बाद ट्रेंड के साथ सेल डालेंगे, वरना हाई टू गोला डालेंगे. ये अब हो ही है कि मार्केट टेम्पटेशन में है. Please come in, please come in, please. And we don't want to ruin all of my profits. I'm up 425 on my apex. So those numbers didn't do much. कौन से वाले? वो जो न्यूज़ के नंबर आए, जॉब ओपनिंग का. Yeah, it didn't do so much. There you go. Carney is saying, what's his name? Mark Carney. I think liberals are coming, guys. Be ready for another 8 years of liberals. आ जाएंगे. हाँ 2 टर्म्स लगाएंगे. सिर्फ कार्बन टैक्स को एक्स करना है, पीयर का जो है ना सारी सपोर्ट, उसकी रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी. बहुत बोल भी अच्छा सब ऑलमोस्ट. देखिए ट्रूडो ने अच्छा, कल मैं फोटो लगाई थी कि मेरे जो है ना पैसे पूरे हो रहे हैं. So this has given me a lot of recognition. I'm still want this to go 8 more years, right? ट्रूडो के साथ मुलाकात है ना. So long story short, कार्नी भी आ गया तो लिबरल ही है ना. It's not like I'm against it. It's just Pierre is only sitting on one thing called carbon tax. हमारे घर में मेरा बेटा Pierre support करता है. It's okay. I support whatever is good for everybody, right? So I'm very pro-immigration as an immigrant. Hey, everybody deserves a chance. It's not live now, right? Yeah, it's live until 2:00. Oh, you can say it. We can put a disclaimer out there that these are just conversations. Somebody told me from PC that there is agreement between Crude, Pierre? Bedford, Yeah. and the mayor of Brampton. So they are getting together, Okay. and they will not support Bollywood. It's just one thread is carbon tax. The moment that thing goes, he loses it all. Once he leaves, then these guys will come up.
Because after this US-Canada war, all Canadians came together as a unity and says, we'll fight it, don't worry. So that was one thing in Canadians, whether you were liberal, NDP, or conservative. So everybody has, like, first thing is, doesn't matter which party, an immigrant shouldn't be saying, no more immigrants. Just please, that's my stance on this, that we are all immigrants. I'm an immigrant. Only this land belongs to Native Americans. And this is one country in the world that belongs to everybody. You know, I'm from Pakistan, you guys are from India. That's two nations. Americans have 300-year-old history. You go to Germany, belongs to Germans. Even in Pakistan, an Afghani comes, we're like, hey, you're outsider, right? Simple. If you're from UK, you're British. But in Canada, you're everybody. So that's the foundation of a good culture, good country, is that Canada belongs to. And if you're on the road and anybody says, go back home, just tell them your Italian dad came a little bit earlier. So tell him to go back home, right? So unless you're fighting with native Indians, we kind of owe it to them that, hey, so. Plus, as you told me, those votes that they started, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ peer coordinate दिखी नहीं। हाँ sir, ਉਹਦਾ carbon tax they. No, he was okay. Like Trudeau made some good, bad mistakes, but carbon tax, the only thing Pierre is standing on. And I see a lot of TikTok videos where the immigrants, the Canadians, I would say third generations, like Germans or Italians, and they're saying, hey, we wanted to go back, right? All you have to say is to them is, just imagine what Indians were feeling when British came, right? Then they started take over slowly, and then, so they kind of, so when British invaded India or China or Hong Kong, so, yeah, so exactly, right? So immigration policies are one of those things where doesn't matter if you're fourth generation in Canada or fifth generation, we owe to native Canadians that, hey, thanks for British for invading this part of the town and giving us the opportunity, right? And ask a white guy, trying Uber or trying doing a pizza, try doing a Tim Hortons, right? It's a tough job, right? And I don't know what kind of jobs we're taking away. Like, so you can wash the dishes at a Tim Hortons, right? If you like, so we are already overworked, underpaid, and we work to the best of our quality, man. And some few bad apples, few robberies doesn't make a whole nation good or bad, right? So, yeah. Only thing is, yes, the law and order needs to be a little bit more civilized. So that's about it. Like, go home, check every street. You would have like 10 nationalities living in your street. My neighbor is Korean. My other neighbor is Indian. Other neighbor is Italian. Then I have Chinese guy in my street. And no problem, man. So my neighbors are that side is Pakistani. Yes. Then there is Sri Lankan, then there is Filipino, and then there is somebody from Germany, and then there is Italian. Nobody's on getting in somebody's throat. Like, okay, my best debate is with them. An immigrant says, "Oh, yaar, bahut zyada aa gaye." Yaar, tusi bhi te aaye sige. Hello, nahi gal kuch ye karo na bhi. Tusi government ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ infrastructure ਵਧੀਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ So playground ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ. I'm just happy we kind of stand up to the bully of Trump and they kind of force them to back down, right? So all right. मैंने यही फिर आपको सैलरी पे रखना चाहिए आप फिर इनकी नहीं वो तो एंट्री नहीं ले रहे ना तो हम जब आप एंट्री लेंगे हम लॉन्ग जाएंगे so I used to have a guy he's like जब राफे भाई कहते हैं लॉन्ग जाओ मैं शॉर्ट जाता हूँ पैसे बन so no that's what I'm saying is you have to plan a trade.
सिर्फ कैंडल को नीचे जाते देखना, एक एक देख रहे हैं, 5 things, 15-10 green, 30-20 green, no diversion area, and that's it. So what you are feeling is the market is talking to you and says, so it's tempting that I'm starting to go down, but I have given like an exact analysis. Yes, we will sell from 66. Maybe look, the new candle open at 11 o'clock. If it goes up, it's a green candle. It's going, if there's, so we have some numbers. If you have to sell, make sure both charts are selling. Don't sell in green, please. When will we sell? Above 66. Because at that time, Nasdaq would have gotten into your expected high. So, because होगा ये एक दो दफा ठीक चलेगा कि आपकी फीलिंग पे नहीं जाना ना कि इथों मार्केट ने गिरना है, किस रीजन से गिरना है, मुझे सिर्फ ये बता दें। वो ठीक है जी, एक 15-10 में थोड़ी सी कैंडल नीचे गए, लेकिन जब तक 30-20 ग्रीन नहीं, रेड नहीं होता और 42 से नीचे नहीं आता, मैं तो सेल में जा ही नहीं रहा। ये मेरा प्लान। फिर आप लोग कहते हैं मैं जब ट्रेड लगाता हूं सही जाता है। ओ भाई, मैं एक सिर्फ 2-3 चीजें देख रहा नहीं, मैं ट्रेड लगाऊंगा। मैं अब देखें, अगर मैं आपके सामने अब यहां से ट्रेड लगाता हूं, राइट, तो मेरा ट्रेड क्या बन रहा है कि कंप्यूटर कह रहा है कि यहां से बाय करो। लेट्स सी, इधर से कंप्यूटर ने कहा है अगर बाय भी करना, बल्कि ऑलरेडी 25 पॉइंट का कल का फायदा देखे, $1200 कल से बने हुए, क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, ओके, बहुत लो चला गया था तो बाय लगा दिया। अब देखिए कंप्यूटर कह रहा है कि बाय करना है ना, देखें तो यहां से बाय करें, ये कंप्यूटर कह रहा है ना, यहां से नहीं बाय करना। कंप्यूटर कह रहा है नेक्स्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए ये वाली, ठीक है, आपने यहां से भी नहीं किया ना, तो कंप्यूटर कह रहा है नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए यहां पर। तो 3 बाय की आपको ऑप्शंस मिल रही है, लो ऑफ द बार, मिड बैन और 30-20 मिड बैन। I don't see any sell here, so why would anybody press sell? I don't know, right? So फिर गलत ही होगा ना, क्योंकि computer is saying go up, so it created enough liquidity and then let's go. And did it go to 600? Anybody notice? 600 तक गई सी थल्ले, 600 कितना तक गिरी, क्योंकि 600 हमारी रेजिस्ट सपोर्ट थी ना, तो 600 से बाउंस करना था। तो आप एंट्रीज अपने चार्ट के हिसाब से करेंगे। देखिए फिर पता क्या, अगर अपनी मर्जी से एंट्री करनी है ना, सिर्फ डॉम खोल लें और बाय सेल दबाते जाएं, 50% आपके ट्रेड ठीक होंगे, क्योंकि एक लगाएंगे सही हो जाएगा, एक लगाएंगे तो हमने 50% पे तो नहीं रहना ना, हमने तो 60, 70, 80, 90% पे रहना है। कर देंगे, जा रही है उधर, नैस्डैक चढ़ रही है ना। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 63 - 700, अभी भी नैस्डैक जो है ना 60 कहाँ तक गई है जी, 680 लास्ट टाइम तक गई है, तो 740 - 670, यहां से सिर्फ 10 पॉइंट का वेट कर लें। अगर सेल करना है तो यहां से 66 का 65 का हाई, देखिए ऊपर वाली रेंज से आगे वो 60 से भी उसने आपको थोड़े से पॉइंट दे दिए। अगर आपने 60 से ही सेल किया होता, सिर्फ मुझे नैस्डैक को बार बार है कि विल इट ब्रेक, इफ इट ब्रोक 680 इट्स डेफिनेटली गोइंग इनटू 710, 720, 730 जोन। ये देखिए मैंने बॉटम ऑफ द बार लगाया ना, तो क्यों ग्रीन जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर ने कहा था कि अगर लेना है तो बॉटम ऑफ द बार लें, यहां से भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी अगली एंट्री फिर ये होगी वहां स्टॉप लॉस के बाद। एग्जैक्टली 100 का लॉस है मैक्सिमम, ये बॉटम ऑफ द बार में 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं बैठना, या निकल जाए 1 पॉइंट के बाद। ये मेरी सेल लिमिट हो गई,
ये देखें आपके सामने $25 बने और मेरा ट्रेड का वो ही ट्रेड है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस था 2 पॉइंट मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो ये देखें जी, आपको वही मैंने कहा था, ग्रीन किया, बॉटम ऑफ द बार से उठाया, 1 पॉइंट लिया, बाहर आ गए। सो यू विल नॉट सेल इन रेड, you will not sell in green, please, 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 until that area is marked on your chart where to sell. 2 पॉइंट के लिए ये जो R2 का अपर है हो चुका है, हो गया, 2 पॉइंट उसने दे दिए, 60 को दे दिए। अब ये अच्छा, डाइवर्जेंस सारी खत्म हो गई, उसने फेल हो गई डाइवर्जेंस। विक्रम भाई आपने 48 वाला लिया था? अच्छा, क्योंकि वो वहां से बाउंस कर गई ना। हाँ, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ वो 42 वाला एरिया ठीक लग रहा था, तो इससे क्योंकि वो जिस स्पीड से गई ना वहां से, तो नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आई एम वेटिंग फॉर Nasdaq टू गेट टू द 700 to 740 जोन। और ना गई तो ना गई, इट्स ओके, 11 बज गए। हाँ सर, 20 पॉइंट ले लेना, 20 पॉइंट बहुत एक्सपेक्टेड हाई से बहुत मिल जाते हैं। सिर्फ इसने 680 तोड़े ना, अभी चल रही है 655 का नंबर, 680 ये तोड़ गई ना तो ये निकल जाएगी ऊपर, ये 740 तक भी जा सकती है। मुझे नंबर जो इसको नजर आ रहा है 755 नजर आ रहा है, तो 60 मिनट का अपर बैंड 750 तक है। ये जो कमिंग बिग बैन है ठीक है, ओनली थिंग है एरिया से बाउंस है और कुछ नहीं है, क्योंकि हायर हाई है, डाइवर्जेंस नहीं है, एरिया से बाउंस है। और अगर Nasdaq में रूम है 740 तक जाने का तो यस, क्योंकि उन्होंने R2 कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इधर Nasdaq ऑलमोस्ट चली गई है 250 पॉइंट ऊपर। नाम से सुनना पड़ता नहीं, आपको इवेंचुअली ये देखें, मेरे सामने सिर्फ ये खुला हुआ, मैं भी स्क्रीन से देख के ही पढ़ रहा हूँ ना कुछ, मैं अपने 15-10 खुला हुआ है, 30-20 खुला हुआ ES का, साथ मैंने 2 चार्ट 60 मिनट वाले खोले हुए हैं, ताकि मेरे सारे एरियाज नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज मेरे पास नहीं है जो आपके पास नहीं है, यानी एक्स्ट्रा मेरे पास कोई, लेकिन सिर्फ Nasdaq का देखता रहता हूँ, इकट्ठे चलते हैं ना। लेकिन ट्रेड में ES में कर रहा हूँ, या Nasdaq में उस वक्त करूंगा जब एरिया में आएगी। लेकिन ये मेरे सारे हैं, देखें हर अकाउंट में 425 बना हुआ है, 10 अकाउंट है, आज कल 1000 था, तो मैं आज सिर्फ रोज $100 के लिए आता हूँ, तो 400 बन गया है, गुड फॉर मी। बट मैं आपका ये ना इसमें अपने इसमें ऐड करवाऊंगा, ठीक है, नो कि सिर्फ देख रहा हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ एनालाइज ये, क्योंकि 4 साल से पढ़ रहा हूँ ये, तो वो देख देख के हो जाता है कि यार, और बेसिक वही चीजें हैं, बेस प्रेशर, सो एंड वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Nasdaq needs 64, 65, so it's getting, so 725 minus, let's do 740 minus 640, that's 100 divided by 7, 14 points, so 6058 plus 14. Upper range of Nasdaq will put us together 100% with ES, expected high. नहीं, 73 पे हमारा क्या है, देख वो 740, नहीं वो 740 पे गई ना, तो ये 73 में चली जाएगी, क्योंकि यहां से 100 का फर्क रह गया ES Nasdaq में।
100 का फर्क है, राइट? तो हाँ, तो और उतना ही 10 का फर्क उसमें रह गया, वो 13 का फर्क, 14 का, क्योंकि 100 को डिवाइड करे ना 7 पे, 69, 70, लेकिन वो क्योंकि 73 करीब है, तो अभी तो खामोशी से, अगर खरीदना भी है, पीपल कह रहे हैं यार ऊपर जा रहे हैं तो क्यों ना ऊपर जाएं, तो फिर उसने आपको दिया था ना, आपने 57 से लेना था ना कंप्यूटर, तो अगर अच्छा वो मिड बैंड थे, मैं बॉटम ऑफ द बार ਤੁਹਾਡੇ सामने लाया ਸੀ, तो खरीदना है तो बॉटम ऑफ द बार, मिड बैंड, 30-20 मिड बैंड, दैट्स इट. Take care, Ji. Sorry, today market is not behaving the way last 2 days were. 5 o'clock it will be. सेल करने टॉप ऑफ Red में. रेड डिजिट सेल करने Yeah. टॉप ऑफ द Yes. बॉटम ऑफ द 2.10 हाँ. All right, which market is up in terms of taking Nasdaq up? Let's see quickly that one. Trading view. Amazon is up $4. Meta is up. Microsoft is up. Tesla is struggling. If Tesla puts a bit of a pressure, it will go up now. Google is up. Nasdaq and Google is at 208. Did have, what's the company value? $2.53 trillion. My God, man. Scary. गूगल कंट्री है Sir, पूरा country like. कहता कॉन्टिनेंट भी हो सकता है अरे है कनाडा की कितनी है? कनाडा से ज्यादा होगी इसकी एक गूगल की शायद. कनाडा की कितनी? 5 ट्रिलियन है. चलो 5 ला लो तो दो कंपनियां हैं. हाँ. चलो एप्पल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट कर लो तो कनाडा हो गया पूरा. साउथ अमेरिका का मेरे ख्याल से S&P 500 लाइक सारा कुछ पावर बहुत है ऐसा तो पावर. VIX is down, so these are up. So market watch. Let's look at quickly market watch. So volatility index, what is this doing? Let's look at VIX. VIX minus में नहीं, ये जो लाइन जा रही है ना उससे नीचे है तो वो ऊपर रहेगा, और अगर 4 बजे ये नीचे हुआ ना तो फिर मार्केट ऊपर ही रहेगी ना. Until 10 o'clock it VIX is down below this line. नहीं सिर्फ नैस्डैक को पुश चाहिए. हाँ जी दसो सर. रिदमिक है, ट्रेडोवेट है. मैंने एनी डेस्क जो कॉपी अपडेट कर देना. एनी डेस्क आपके दोनों से आपका दोनों अपना दोनों रीड कर दिया तो डेफिनेटली आपका दोनों नहीं आपको पता है आपने दोनों दोनों को जब तक है. अच्छा अब जो ग्राफ आपके यहाँ पे लिए गए हैं वो सर मैंने एनी डेस्क जो उन्होंने अपडेट कर. एनी डेस्क 177 222 000. या एक्सेप्ट करना जी.
सिर्फ टेस्ला का वेट हो रहा है ग्रीन में आने का। टेस्ला के ग्रीन आई तो ये ऊपर ले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी उनकी ग्राफ जो है ना सेटिंग, दे चेंज्ड एवरीथिंग इन ट्रस्ट ईयर। सर, एक दफा बिग बॉस को जो दिखा दें वो कर देंगे। एक्सेप्ट कर लो जी। नहीं जी, हार्ड टाइम मिल रहा है उसको। ये ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल मिलते हैं। है वो निकल गया। आप जो भी चेंजेस लेकर आए हैं, नहीं मैंने किया तो गुड बैलेंस है। सर थोड़ी जी लाइट एली ऑन कर, एली लाइट ऑन करोगे भाई, एली लाइट ऑन कर दो। दैट्स परफेक्ट, दैट्स गुड इनफ। हर महीने ज्यादा डार्क हो गया। अक्खा खराब हो जानी है। ईमेल पे डालनी पड़ेगी जो आपने आपने आपका जो बैंक अकाउंट खुला होता है तो बैंक अकाउंट से ईमेल में कोई जैसे वो वाला PS5 बंद ਕੀਤੀ ਹੋ PS5 बंद ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ बैंकिंग शुरू मैं पोस्ट ऐसे करता था नहीं वो लाइट इनफ होवे थे। ये ਉਹ रेंज में ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ सर एक्सेप्ट होया एक बारी ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ। लोन जो है वो भी बंद कर दिया क्लोज फ्लो ऑप्शंस एंड प्राइस हाँ जी, एनी डेस्क दोबारा कंप्यूटर इक्वली रीस्टार्ट कर लो। Again, bottom of the bar gave you 1 point. No. बंदा थक जाता है और वो टेम्पटेशन में ले जाती है कि यहां से नीचे जा रही है कैंडल, मैं सेल कर दूं, फिर वहीं से देखें सेकंड टाइम बॉटम ऑफ द बार उसने आपको ले गया ऊपर। टेक प्रॉफिट पूरी बार दे गया जी वापस। Let me open R Trader to see if I can get depth of market level 2. $628. करना चाहिए देखो सर कितने टाइम देखा नहीं नहीं Nasdaq I'm waiting watching Nasdaq 700 नहीं 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 मैं तो नाल ही बैठा मैं को देखो मैं भी गलत करूंगा तो इत्थों खराब होएगा ना। मैंने कंप्यूटर ने एक नंबर दिता है 73 वाला, एक नंबर दे अगर सेल करी तो 73 तक करी वरना बाई करी जाए। बाई कितों लॉ ऑफ द बार या मिड बैंड या दूसरा मिड बैंड
Bottom, just the last point. So right now, just the last point of the bar. So 10 ticks. So the bar is 10 ticks. So 616150 minus 10 ticks is what? 10 divided by 4. 2.5 points. So 6061.50 minus 2.5. So your entry would be at 59. So bar is sitting at 58.75. Yep, 3 points. 58, 605875 plus 3. Yeah, 2.5 actually. There you go. Third time it gave you a point within that bar, but third time is a bit 605875. अब शायद थोड़ा Nasdaq जाना और liquidity create करके आए, लेकिन अभी भी कोई सेल नहीं बन रहा. सर देखो तीसरा बार भी चल गया. नहीं टेम्पटेशन है, लेकिन टेम्पटेशन कह रही है ग्रीन च बाय करो बस. दैट्स इट. अच्छा करो जी एक्सेप्ट एक बारी. Tesla is not Tesla. Today is Google, 5 p.m. Not Tesla is done. Tesla and Thursday is Amazon. Today is Google, 4. आया एक्सेप्ट होया? मैं देख बैठो बैठो. नहीं एक्सेप्ट नहीं. पहले तो इसे जाएंगे इधर. निंजा किधर गया? निंजा log trades. Download the latest file. ठीक है, देखते हैं. खुला नहीं जा रहा. ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ 11 ਫਿਰ 11 ਨਹੀਂ फिर 10 11 10 1 ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਾਰ ਤੇ ਬਟਨ ਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 12 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. नहीं हाँ नहीं फिर 12 ਇਹ 10 ਹੀ ਰਹੇ. फिर इन्हू 11 करोगे ना. इन्हू 11 12 10 11. ओके फिर 11 हाँ 11 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ब्रेक इवन. यस ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਾਰ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ यस एग्जैक्टली. नहीं वो कैंसिल क्लोज कर दियो. इन्हू लॉगिन करो. बहुत स्ट्रगल हो रही है जी. 3 बॉटम ऑफ द बार रिट्रेसमेंट डाइवर्जन. 4 है. अच्छा simply 60. What's the bar price? 6061.50 minus 2.5. 59. So 58.75 would be your entry. So 2.75. So जा रही है जी Nasdaq थोड़ा थोड़ा चढ़ रही है. So just 2.75 behind the top price. बड़े अरसे बाद सर नजर आए. चलो देख रहे हैं कि थोड़ा देखो ट्रेड का पेयर रेप्लिकेंटो खुला है. नहीं
एक पेज के लिए you have to wait for some time, but then there's so many trades. ये वर्जन देखना है. You might get one trade in there, but in there, 15 times you could टाइम get रहा 10. Oh, first time. So this is one version behind, no problem. Let's upgrade it. Tools, import. कि जेड़े चार्ट्स तो नहीं चाहिए उन्होंने भी नहीं वैसे कोई गल नहीं अपग्रेड कर ली रैम थोड़ी 16 की है ना हाँ ठीक है केड़ी वाली हाँ 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 सॉलिड देखो ਇਹਦਾ वेट हो रहा है कि चार्ट्स लोड हो जाਣ फर्स्ट लोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपडेट होने वाला कुछ yep let's do this एक और काम करते हैं ऐसे डिस्कनेक्ट फ्रेश कर देने रेस्ट एक बार रीस्टार्ट करना टेस्ट करते हैं आगे जी प्राइस आपके एरिया में उधर नैस्डैक रह गया ऑलमोस्ट 15 पॉइंट 6 सेल सर उधर 73 या 66 के ऊपर क्योंकि अभी नैस्डैक में थोड़ा सा पॉइंट रह गया दे बोथ ऑलमोस्ट इन सिंक सो 15 divided by through 2 points from here so and इनको क्लिक करो and then skip कर दो हाँ जी सर देखिए 73 एरिया है तो सिर्फ मैं नैस्डैक को देखूं तो वो उसका 740 पे जाएगा तो 730 बनेगा 73 यस नाइट सेशन हाई भी है सारे हैं सो it's completely up to you in which way do you want to take this game अभी भी बॉटम ऑफ द बार से है अभी मिड बैंड आ रहा है देखें 60 अबव R2 है तो 60 आपकी सपोर्ट बनेगी क्योंकि मिड बैंड भी 60 पे है 30-20 का मिड बैंड 58 large triggers are wide open Nasdaq is starting to create so this push on Nasdaq came 50 points so for Nasdaq 150 points not a big deal so तो 4.75 पे कैंडल बनती है वो कैंडल बनते ही वापस ऊपर चली गई सो
Nasdaq came to 688. सर तो अगर फिर 700 ना लीजिएगा, थोड़ा देखा लो, क्योंकि नहीं है 700 देखो, 688 तो मुड़ गए यार, इन्नी सानू तंग कर रही है। 700 आ जाती फिर ठीक है, क्योंकि इत्थे उन्होंने स्पीड पाई ना तो 740 टप जाना, but it's okay. Are you gonna train us today? No, there is no more training. That's it, right? So yesterday you said. No, I'll teach you guys on how to buy. Did you guys watch the videos? Yeah, Okay, start putting in the trades. I did. Okay. Can you open my account? No, but you ready for that? Yeah. Okay, no problem. Any desk, anything. The training part is really those videos. You gotta buy, sell. And if you really need to do hands-on, sit with Majid Bhai in the morning. So instead of sitting here, I'm gonna push you guys into that room. So all you're doing is just buying, selling, stop loss, buying, selling, stop loss. That there is nothing else though. So that's it. So if you're buying correctly, What's the reason? There was some confusion there. you ask me which confusion. So you ask me, okay, what part are you not getting? That's what when exact time when you said R2. You're not supposed to do R2, R3, R1 at all. Your job is green midband, buy there. Red midband, sell there. Like today, 6 midbands went up. So if you were putting a trade in on every, you're profitable. So today was no selling at all so far, unless the price went to R1 and then R2. But that's my job, to tell you where to sell. Your job is green, I'm buying. That's it. So even tomorrow you will come, sit down, green to buy, green to buy. So this really doesn't, because software is doing the job, right? So your job is, what is computer saying? If you were to buy, where would you buy right now? Tell me. No, the mid-band price for 1510 is where? Mid-band price on 1510 chart. From 60. Correct. That's where you would put a buy limit. All right. यार डोम ना वो स्टॉप लॉस लगाना मिडिल क्लिक से मुश्किल, मैं इसलिए हर एक को चार्ट, ये देखें, ये आपके नंबर है, यहां जाएं, राइट क्लिक करें, बाय लिमिट लगा दें, जॉब डन। दैट्स इट। प्राइस आएगी, आपको ले जाएगी, आपने $100 देखा, बंद कर दिया, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं। आई नो इट साउंड्स टू, देयर इज नथिंग एल्स। अब यहां से कलर चेंज हो गया तो निकल जाए, और इससे ज्यादा इस सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं है। अब 5 दफा मैं 9 o'clock से बोल रहा हूं, जब से मॉर्निंग में आए हैं, आपने यहां बाय करना था, ठीक है, अगला यहां बाय करना था, यहां ऑर्डर लगाएं, यहां ऑर्डर लगाएं, यहां ऑर्डर लगाएं, यहां 1 2 3 4 5 ट्रेड लेने थे आपने सुबह से आके। आप कल भी आएंगे, सेम है, ग्रीन देखें बाय करें, रेड देखें सेल करें, बस, और कुछ नहीं है, यही जॉब है। और आई नो मैंने और इससे ज्यादा और कोई ट्रेनिंग नहीं है। ग्रीन देखे, मिड लाइन पे खड़े हो, अपने $100 देखे, बाहर आ जाए, और अगर कलर चेंज हो गया तो बाहर आ जाए, क्योंकि कलर भी तो चेंज हो सकता है ना। तो अब मेरा ऑर्डर क्या लगा हुआ है, मेरा ऑर्डर लग गया है, ये ऑर्डर लग गया 6060 पे। अब मैं 6060 पे ऑर्डर लगा के बैठा हूं, प्राइस वहां आएगी तो क्या होगा, या 6060 से ऊपर चली जाएगी या नीचे। अगर नीचे गई, कलर चेंज हुआ तो बंद कर दूंगा, और ऊपर गई, कलर मेरे प्रॉफिट में हो गई तो बंद कर दूंगा। यही करना है आपने अगले 20 साल। फिर आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे यार एरियाज क्या होते हैं, वहां से आपने सेल कैसे करना है।
तो अगर आप 4 क्लासेस में यही है, ग्रीन देखें तो बाय करें। तो आपने हैंड्स खुद करने हैं कि यार ऑर्डर लगाना सीखेंगे, राइट क्लिक करके अपने ऑर्डर लगाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि अब आप यहाँ पर बंद करके बैठे हैं चार्ट ट्रेडर, आपको पता ही नहीं है कि आप राइट क्लिक करते जा रहे हैं, आ ही नहीं रही विंडो, आ ही नहीं रही। आप इसका मतलब है कि आपने चार्ट ट्रेडर ऑन नहीं किया। यहाँ जाएं, अपना अकाउंट सेट करें, सिम है जिस तरह, यहाँ पर मेरा ऑर्डर लग गया, ये बाय लिमिट लग गई, बस मेरी जॉब फिनिश। होल डे मैंने एनी डस्ट मैं कर देना ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट any dasta no. So that's really the only training. Green, buy. Red, like so. Since 9:30, I'm here. How many orders did you place? No, for you, you're not. No. 5 times orders came since 9:30. 9:30 market officially open, right? Stock market. Right now it's 11:30. 2 hours. In 2 hours, you should have placed 5 buys at 9:30, 9:45. So there's a line running. Right now, I told you, there's a buy right now, 6060. So you should click and go click on that buy button. Because until you will sit and not practice, there is even Vikramji, Majid Bhai, nobody's going to hold your hand to trade. So just don't be afraid to put in an entry. Buy, sell, stop loss. Now, here's my stop loss. If the color changes, I would right click. I would say, here's my stop loss. Done. Meaning, if the price comes down to this point, I will exit my trade. So, really, my trade, my job is done. Because it's green. I'm seeing green, right? So, this is what you've been taught in the 4 classes. Green, buy. Red, sell. Simple, right? So far, you guys are with me, all 4 of you. Why aren't you not taking a trade? What? I'm not sure what's holding you back. The demo account, aankhein band karke kare. No, but what part? Like it's look. I'm still trying to understand where you're having hesitance. Look, the chart is running, right? This is live market. I turned on chart trader. Now I see this option. I will take, my video says pick an account. Let me close this. I have an account. I took my cursor to 606025. I right click, buy limit. That's it. That's called a buy order. Now, because computer is saying today, if you want to buy at this point, 6060 is the best price. And what if the price goes to red? I will right click and I will put my stop. That I don't want the price to fall further and eat my account. So your job for the next 1 week, including today, is buy, sell, buy, sell. Green to buy, red to sell. So from 9:30, you're not just listening. You're taking a trade with me. Your job is to, even tomorrow, whole 23 hours a day. If you see sell, if you see red, sell. So same, whenever red will come, I will sell the. So it's okay. You can ask me. It's not a problem. Like, where are you struggling in this? They're not familiar with the software. No, but the software, like it's a tool. Okay, so you're having. ठीक है, आप मेरा ख्याल है इनको एक डेमो दे दें। ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हेज हो जाता है, कोई पीए नहीं अलाउ करता, उन्होंने बंद करो फिर लॉन्ग जाओ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। हाँ, रोल ओवर ते फुल पैसे हो जाता है ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ।
सर 694 सर 694 आ गया, थोड़ा जिहा रह गया। यस पॉसिबल है जी। Then you choose the account you want. Is that? And now, right click. Leave your mouse. Leave your finger. Bring your cursor over here. Yes, 700 area I'm marking though, guys. 694, so 700 on Nasdaq is done. See your order of picture? Yeah. This one? Yeah. No, just. It's buy. So go to buy level. No, it's not buy. Go to buy level. वो नहीं मेरे पास है। Check mark yes. हाँ नहीं वो हमारे पास है। So this is our moving now, right? Yeah. So what's आ गए जी 794 से, सॉरी जी, वो 66 वाला पूरा चला जो मैंने आपसे कहा था। 66 से शॉर्ट कर देते तो आप मन गए थे पैसे, क्योंकि वो बिल्कुल एरिया पूरा मैच हो गया था। वो गई 694 700 पे। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपने जिस तरह यहाँ ऑर्डर मैंने लगाया था, अगर आपने यहाँ बाय किया होता तो आपका $1.50 बंद हो गया। बंद मैं ईएस तो तुसी ईएस ले। ठीक है हाँ ठीक है। और डाइवर्जन है क्योंकि गैप ट्रेड है। अच्छा अब लेना है ना 750। 30-20 का तो वैलिड है, उन्होंने ले भी लिया है। वो 58 पे एक वो हो गया। मैं नीचे था। हाँ हाँ वो उन्होंने ले लिया 30-20 का कमिटमेंट। अब स्टिल वैलिड है? नहीं नहीं डन है डन है डन है। मैं सॉरी अब देखिए 50 पॉइंट अगर आपने वहां बाय ऑर्डर लगाया होता तो आपके $50 बन गए थे। जिस तरह है 740 पूरा पूरा 740 750 रखो जी। और 73 का नंबर हो गया उधर ईएस में। 66 worked, so from 66 100% it came down। नहीं क्योंकि मैं नाल कैलकुलेट कर रहा सी 700 वाली रेंज, या अगर वो 700 ते आंदी है ते ए कित्थों मुड़ेगी? नहीं वो बनी 740 तो 73 सीगा, 700 ते इधर सीगा 66 बनता सी, वो 66 तो मुड़े आई। देखो अगर ते बॉक्स से सिंक नहीं है ना, अगर 100 पॉइंट नैस्डैक देना, मैं 100 नु डिवाइड करदा है 7 ते 14 13 14 15 ते अगर नैस्डैक 100 पॉइंट उत्ते जाएगी ना ते 15 पॉइंट उत्ते जाएगी। ठीक है हुण मैं देखिया कि नैस्डैक दा एक्सपेक्टेड हाई 700 है। ठीक है एदा R2 एदा 73 है। ठीक है वो 73 कितना सी 73 740 तो। ठीक है ਹੁਣ अगर 700 ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਨੈਸਡੈਕ, ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 66 ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 7 ਜਿਸ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਕਸਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿੰਕ ਹੈ नो डिवाइडेड बाय 7 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਸਡੈਕ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਐਸ ਦੀ ਮੂਵ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। नहीं मूव देखो एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक 100 है, उन्होंने डिवाइड करो 7 ते ओ ईएस की मूव निकल आएगी। चल पड़ी है जी गाड़ी नीचे नैस्डैक की वाली तो ईएस भी स्टार्ट हो गई 700। तो अगर आपने 66 से शॉर्ट किया है यू आर मेकिंग मनी। नंबर देना जी 1195
as 7 you start making money, 312, it's 312 483. Right? सॉरी मुझे ना आप व्हाट्सएप कर दें नंबर, मेरा नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दें, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। Okay. Rather than stop loss now, just practice how to get in the market and get out of the market. Or let's say you place your order over here, right? And you want to get out over here. So right there, you bought over there, you sell. So once it takes the order, goes back up, it will close it. You're giving it a command to close your trade at that point, that number. It's 58, 45. Now, one more thing, pay attention to when we say when it's magenta, sell, when it's green. From where? Takes you money, $100. No, not by market. Why? Did I say by market? सर व्हाट्सएप कर 6 मैंने भेज दिया। Yeah, but did I do market? No. I did limit order. Limit order. So why even there are many options, but if you don't know, see, knowing how to drive is more important than driving with a license. So learn how to drive. And the best way to do it is close this trade. What's the color? Magenta. नहीं लेजेंड 70% ऑफ सुपर एरिया 70 को लेजेंड थे 70% ऑफ $50 था। है ये नहीं सर, है ये नहीं। हाँ मीन के इधरों ट्रेंड चेंज होया लेकिन है ये उन्हें R2 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। ये 30-20 ਦਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। 694 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ 700 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ 694। सर एक्सेप्ट दबाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेप्ट ਦੀ ਉਹ कंडीशन आई है, लेकिन अब ये 700 तोड़ गई ना, 740-50 पे अपर बैंड है, 755 पे बैठा हो, सबसे सेफेस्ट वो है। देखिए 740 भी है, 50 भी है, लेकिन जो 60 मिनट का अपर बैंड है ना वो 755 है। ईएस का अपर बैंड दूर है, मैं हूं नहीं दसता है। आपको बता देता हूँ, वो सर 97 थे, दूर है। सर ਇਹਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 55। Let the price come to you. Don't run after it. When you let the price come to you, your profit to loss ratio is really good. Yeah, that's magenta. That's magenta. Both are magenta, right? Oh yeah, you have to confirm it. करो, आगे करो. This way, ये से निकलने मिलता है. इसको मूव करना आता है. LMD को एक बार, LMD को एक नहीं, LMD, हाँ, मूव किया फिंगर, और इसको ऊपर लेके जाओ, नहीं फिर दबा, फिर दबा. ये सर फॉर्म पढ़ दो। ड्रॉप हो, ड्रॉप हो गया. Okay. So what this means is that you have to be bought complete solid for you, right? Yeah. अब मैं देख रहा हूँ कि ये 600 से अगर ऊपर गई, अगर 600 से ऊपर गई फिर ये दोबारा जाएगी उसको टेस्ट करने। 600 हमारी सपोर्ट बन गई ना R2। बाय नहीं, बाय करना है तो थल्लों लो टू हाई, उन्होंने क्या सी कि बाय आज करना है तो लो टू हाई या हाई टू लो। हाई टू लो असी 6 टिक्का तो रह गया, 6 पॉइंटा तो, लेकिन याद है असी पहले कुछ जानते होते सी, क्योंकि नैस्डैक ने इंटरेस्ट रेट तो इतना डराया कि पूरे नंबर ते
तीन वारी 3.5 महीने च हो गया ए हुण ट्रंप आया ना ਇਹ ਟਰੰਪ ਆਏ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ 5 ਵਜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸਰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਰ ਦਬਣਾ ਜੀ अपना ईमेल कंफर्म करो जी ईमेल नु कंफर्म करो है ਤੁਹਾਨੂੰ ईमेल हो गया ठीक है जी कंपनी नेम बेशक ना पाओ 650 से बाउंस कर रही है 50% के रिट्रेस है अब ये यहाँ से 50 के दो मुझे देना 750 से ट्रेड डालेंगे 100 पॉइंट लेंगे हम क्योंकि ओवर पीछे रह गए कितने घंटे रह गए पीछे 5 घंटे दो नहीं लेकिन एफटीएम हो हाँ नहीं अगे बैठे ने कल 4800 लाके गए ने मार्केट तो कल वाली मार्केट ना प्यारी जब तेज आती है ना जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है ना उसमें फायदा उठाता है क्योंकि आप जिस मिड बैंड पे लगाएंगे फौरन 150 बन जाएंगे अब आप आज 5 मिड बैंड लगे उन्होंने जान निकाल के आपको $50 दिए तो उसमें ये था कल मैं जिधर लगाऊं तो सर कार्ड अब 6058 पे आप लोगों ने सेल लगाना था 6058 पे सेल लगाए अब 2 पॉइंट मिल गए आपको एटलीस्ट 1 पॉइंट तो नजर आ गया 6058 गाइस 6058 चला गया है देखिए दोनों रेड थे गाइस बोथ वर रेड राइट कंप्यूटर सेड sell at 6058 it's gone but that trade has given you $150 so done that's it so if it's red you're staying and selling from where midline so if you had placed your sell order at 6058 you're done $150 so okay but too late but you should have already when the price was going down you had your stop ready that I will enter at 6058 whenever the color changes computer starts giving you the best price so when it was going down computer said sell at 6058 and you sold at 6058 and you got your $150 and you're done so if both charts are red sell from where midline if both charts are green buy from where midline so far since 9:30 5 times it gave you up and 1 time it gave you down and 100% it worked so अभी अब थोड़ी बाइंग शुरू हुई है टेस्ला में फाइनली टेस्ला में बाइंग शुरू हुई है तो ये 740 पे चला जाएगा हाँ जी हो गया सर मैं क्विकली इस तो बाद में तो एक्सप्लेन कर देना ਇਹਦੇ रूल्स की ने लेजेंड्स ने ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਜਰ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਰੱਖਣਾ let me just open up trade away ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
हर company that different is because of so many people logged into Trade Await, it's giving us this issue. This is first time. Every company you try, so ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ. So even tomorrow morning or at night, whenever you get a chance, just take the mouse and practice buy, sell, stop loss, buy, sell. That is it. For the rest of your life, software will do everything. Your job is buy, sell, stop loss. That's it. Buy when it's green, sell when it is, and stop loss every time. Stop loss means if it changes color, which price I want to get out. And it's giving you a live trade every time. That, hey, this is the best price to buy, best price to buy, best price to buy. So you don't have to sit and be scared of touching. Nothing you can do can mess it up. It's a demo account. It's not a real thing. So just, you gotta, it's okay, galat ho jayega na. Meaning, what's the worst could happen? What's the worst could happen is you could lose your demo account, right? And then you can sign up. But until you would practice entry, and then and you're like, I'm trying and it's not giving me an entry, then I would say, all right. But that 2.5 hour video, I know I still go over a lot of topics quite fast, but your job is green to buy, red to sell, put your stop loss. And because its software is very complex, there are hundreds of things happening, but for the beginner, we don't care. We only care for you to say, hey, if it's green, buy, if it's red, sell. And that's enough for you to make a couple of grand a month. Honestly, no issues. But don't panic don't be scared from the entry. So what am I setting up for this gentleman right here is a funded account. Okay, sir. You have this amount, it says 25,000. You have this amount, 1,500. These are your critical things to watch, okay? And I will bookmark this in your news folder. So let me put this is called Trade Await, and everything is all done. So if you want to see your ledger, it says click on these two lines, and you can get all the reports of orders, histories, everything. Today, you put 0 trades, right? And you can close this. So this website, always keep it open. You have Ninja and you have this. Now, let me set up your Ninja Trader. And I will ask Majid Bhai tomorrow to sit down with you. My legends. So 10 minute start account at Raja. Let me explain it quickly, and you're all set. I've logged out. emergency shutdown करना तो किधर से जाना? राइट क्लिक उस अकाउंट के ऊपर और एग्जिट पोजीशन. हाँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, लिखा है एग्जिट पोजीशन, so they'll close everything. Sorry.
नहीं नहीं नहीं, वो इस हर अकाउंट, क्योंकि किसी के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो इस तरह हो जाता है. All right, let me explain you what you have to do for the. Okay. Okay, sir. So today you're buying your Legends account. It's a funded company. You're on stage number 1 called Apprentice or EA. Today you have spent $50. Okay. On February 4th, your exam started. Okay. Your job is to turn this amount. Remember I said over there's an amount written 25,000. This needs to go to 26,500. So that means make $1,500. That's what you're doing. That's the gap. Same time, don't lose 1,500. So that's your available threshold inside the system. 5 rules, strict rules. Make 1,500. Don't lose 1,500. Close your trade every day at 4:30. You can leave it until 5, but I recommend 4:30. Don't trade anymore. Do this in 7 days. Don't any 7 days out of 30 days. You have 30 days. On March the 3rd, 2025, they will ask you for another $50. So in 1 month, completed. But you cannot complete this exam in 1 day. You cannot do this in 2 days. You cannot do this in 3 days. You have to do this in minimum 7. But you can do this in 28 days. No problem. They don't ask you to. They just say don't do more than less than 7, right? So you can do as less as 7, but as high as full month. No problem. But give them a couple of days to analyze and check your trades. Otherwise, if you do it in 30, and then you send them a request, they say, I need 24 hours to test, check your report, and then you will get pay renewal. So try to do this in maybe 21 days, 22 days. All right. So they said, don't make more than 450 a day. That's a rule. They want you to be disciplined for 7 days. So if you today made only thing to watch for, which most people struggle here. So let's make some boxes here. 1, 2, 3, 4, 5, and I'll make 6, 7, 8, 9, 10. And realistically, I will do full 20 days of trading. So that's 10, 5, day, week 1, 10, 15, and 20. So that's your 1 month. 20 days of trading days in a month because you have weekend. So now you see 20 boxes are there. You tell me tomorrow, what should I give your end of day? Meaning 5 o'clock, you made money, you lost money. Give me a number so I'll start writing on a ledger. 300, day number 1. Okay.
Just carefully see how I write this. Okay. So you see what I did? I wrote three numbers. I wrote $300 here. I wrote 0 here, and I wrote $300 in this day number 1. So what that means, they will not give you more money than $1,500 ever. If today you made $300, okay, no problem. What is your account balance? Let's do a balance now. 25,000, and let's do it right away. Today you made 25,300, and you have $1,500 available. So tomorrow you will start your journey at 25,300. Not you will not be given more money than $1,500 in your account. Majority at the beginning, they get confused. They're like, well, last night I made $600 and today I lost $1,500. I still have so much money. No, that's why I given you that website. Your maximum drawdown is written there. Okay, so you have to make sure if you have the highest limit is 1,500. Now give me day number 2, good or bad, we'll analyze it. Bad. Okay, sure. -100. Oh, no problem. Day number 2, minus 100. Day number 2, minus 100, minus 100, minus 100, minus 100. Okay, let's do the math here. Your target will never move. It's always stays as this number. You got it? Now look at what happened. You did 2 days of trading. 2 days are counted. You started with 25,000. Day 1 you made 300. Day 2 you lost 100. Your balance went down to 25,200, right? So, however, you also lost $100 from your available bucket. Day number 3. Let's make a profitable day. 150. Okay, good. Day number 3, 150 in plus. Day number 3, 150 in plus. Plus. Here is another thing. You know what happened here? Your maximum is 1,500, right? You made 150. So they gave you towards your target. But your drawdown was only down by $100. So they out of that 150, they put $100 towards your drawdown. So again, you made 150. Great. 05352. 150. Here they will give you 100. So you're back up, but again, your threshold is full. So you go down, they give you money, not a big deal. But they will only give you a maximum capacity of $1,500 from any given time. So this is how the ledgers will work. Every day at 6 o'clock, account will get reset. And if you have more than 1,500, 1,500 will come back. So this target is now going down, remember? So your goal is to get to 26,500. If you lose any money, you have to recover it towards your highest target. So this is basically your... Not make more than 450. Yes, if you do, you make $700. So what they will do is, they're like, all right, congratulations. This target, instead of 1,500, goes to 2,300. Now you have to make more. If you decide to work hard in an exam, there's no reason to. Yes, PA, you can make more, but so in the exam period, there's no reason for you. If you're done 450, go home. I mean, you're like, I'm not touching it. Yes, there are days where you accidentally make more money. Just go and lose it. The same 450. Correct. Until 1,500. उसके बाद रूल खत्म हो जाता है. उसके पहले वो कहते हैं उसके अंदर रहना है.
नहीं वो टारगेट भरा देंगे आपका, तो वो कहते हैं वो ये नहीं चाहते कि लोग आए फटाफट करें और so. All right, so this is why I wrote 3 possibilities. First possibility is you lost your account. Remember, in this account, this is not a demo account. They're now going to hire you. As per my radio ad, this is a funded company. They want to hire you. They're taking all the risk, by the way. In order to give you $1,500, you risk 2 or 3%. You only risk $50. The $1,350 or $1,450, they are risking. It's not real money they're risking anyway. It's demo So one option is that March 3rd comes and you lose $1,500. Up, down, up, down. All right, you failed that exam. Okay, so you can rebuy a new exam after 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, next day. They like this free money. This person comes in, sits, fails, free money. Comes in, sits, free. Your goal is not to fail. Your goal has to understand, where am I doing wrong? Because remember, you join this institute to make money. And the idea is to make an average person can easily make a couple of $100 a day. It's like, even if today you took 5 mid-bands at $50 each, and maybe with an area, you made $300, $400, $700, depending on. I'm here to guide you, but you still have to take your entries yourself, right? So yes, I'm guide. Forget about R2, R3 because as a beginner, but just take mid-band entries. If you fail, your exam is finished, your account is blown, it's called liquidated, and then you have lost that $50. They're not coming after, hey. So if you were to put in a real account $1,500 and you lost it, you will feel the pain of $1,500. Here, you have a capital of $1,500, but with only $50. Sometimes they put on a sale, this account becomes like $25. But right now it's $50. If you pass, they will send you a certificate. Thank you very much that you have passed this test. Will put you in stage number 2. Third option is incomplete. Most users who are on bigger accounts, 100,000, 200,000, they have bigger accounts too. I'm doing the $300,000 account. 300. I have to make 20,000 in one account. That's very difficult. It's not easy to make 20,000 on a live trailing threshold in a month. So 1 month I did about $9,500 last month, from January 2nd to February 2nd. Now I will do a rollover, meaning don't touch my balance, just continue. So I'm continuing my target in month number 2. So if you get to day number 29 and you got your target to $26,450, they'll do a rollover for you. Whether you are left $1 to make or whether you are left 15, they don't care. They don't know, because they don't touch your account. They just say, hey, we're going to roll you over into the round number 2, month number 2. So that's a subscription base. Unless you go in and cancel this, either pass, cancel it. If you pass, they'll cancel it for you. They'll move you. But if you fail, you have to go and cancel it. Otherwise, they'll keep charging and keep renewing it for you, because they have no idea you have failed or incomplete. So you have to keep a track on these things, please. Right? It's coming down fast. Like 30-20 ka mid band chal gaya ji, bada behtareen chala. So meaning if it's red, sell. What is the computer saying? So go put a limit order at 505-6057. Right click, sell limit. Sorry? सर आप लगा सकते हैं, 11 के बाद है, सिर्फ वो रूल चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ सीख है आ गया. So put your order at 6057. Sell limit. Hello sir. So this is how this exam will work. Today, tomorrow is the first day. You will go trade with a method: area, mid band, gap trade,
divergence trade. So for beginners, just mid band is good enough to make $150 a day close, 150 a day. नहीं, वो स्टेज 2 की है, इसमें नहीं है. वो स्टेज 2 के रूल बदल जाते हैं. पहले इनका आज ये शुरू किया तो आज स्टेज 1 का रूल है. So if I made like let's say 1600, how much they gonna pay me? 1500? Zero. In this account, they don't pay you You're anything. not paying me. This is for your test account. So they want to know if this person can really hang on to our money with care. So the idea is, imagine if I said, all right, sir, here's $5,000. Can you trade my account? But before I give you real 5,000, I want to test if this person, but there is an examination freeze. Yeah, I'll hire you, pay me $50. And एक second जी. आपने सेल किया था 6053 पे आ गया था, 53 पे आया. आपने ऑर्डर लगाया था 6053 पे. ठीक है. लगा ऑर्डर? Yeah, लगा हुआ है. हाँ, ठीक है. It's in minus. कहाँ से एंटर की थी? प्राइस क्या थी आपकी? 6051. 51 क्यों है? मिड बैंड 53 पे था. 53 पे आपको $0 होने चाहिए अभी, या एटलीस्ट -50 होने चाहिए, क्योंकि मिड बैंड की जो प्राइस आ रही थी वो 53 आई है. तो आप थोड़ा जल्दी एंटर हो गए, तो 53 पे लगाना था. तो वो प्राइस अब देखें, आप प्रॉफिटेबल होंगे. जिसने भी 53 से किया है, डन हो गया ट्रेड. जी सर. हाँ हाँ, वो साथ साथ चलता है. या मैं कर दूंगा, क्योंकि ट्रेडोवेड में लॉग इन करके तो उसका एग्रीमेंट साइन करना है. तो मैं फिर जब मैं उसको बाय करता हूं, हाँ हाँ, मुझे करें, मैं करवा दूंगा. 5 मिनट लगते हैं खुद. हाँ हाँ, कोई मसला नहीं. हो गए जी, पैसे बन गए. मने पैसे मने ना, बन गए. इतना सा बात है. ये कितना आसान था कि आपने एक प्राइस आई, माने आपके बने Yeah, 25 plus money. नहीं, आप अर्ली एंटर हो गए थे. So you should have waited for 53. If you had entered at 52, 53, you are already done like $300, right? So it's one trade, that's all. But you wait on your bus stop. Both are red, right? Yeah. Computer said sell it at 53. You went and sold that at 53, you're done. That's it. It's one trade. Whole day you didn't take a trade. This one trade is done, $150, and you go home. All you need is a one trade in a day to get your $300. वो देखें, अभी आपको विक्रम जी ने सिखाया, भाई सेल करें, $150 करके खत्म हो गया. नैस्डैक आज धोखा दे गए यार, 6 पॉइंट से. 6 पॉइंट से यार. 700 था, 694 है. नहीं, आपने लिया कुछ? कोई बात नहीं. मैंने वो 66 वाला ES ले लिया था, क्योंकि मैंने उसका मैथ करके मैंने कहा 66 से तो सेल करें ना यार. I have like 2 questions. Yes. First, what is our target every day? Like, all the people are trading. Different. Okay, you have to understand. Because, Daniel was saying like 200. Yeah, that's perfect. 200 is a lot for beginner to like. I ask everybody to do $100. $100 in a day, you will finish this in 15 days, right? 100, and then if you lost a bit of money, maybe same day you recover some, but $100 a day is good. Have you had taken this mid-band and you're trailing? You are laughing, meaning computer gave you a price. I'm red, I'm going down, and Nasdaq has fallen almost 100 points, 110 points from our area. That's it. Retrace came. 11 o'clock was a reversal. When did the reversal came? Around 11:45. So I think, what if I want to risk my own money? Okay, sure. It takes 2 weeks to open an account. Company is called GFF Brokers. Is your first time trading futures? Okay. I'll Punjabi ਦੱਸਣਾ ਨਾ, 4 ਗਾਲਾਂ ਦਿਓਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1500 ਪਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸੇ.
एक बजट दसो ना 100 पाना 1500 तो उत्ते ही पाओगे ना वैसे 5000 पा दे मैं एग्जांपल देना ਤੁਹਾਨੂੰ एंट्री नहीं आई ठीक है वो 5000 वाइप ਹੁੰਦੇ ना ब्लिंक ऑफ एन आई लगता है क्योंकि होएगा है कि ਤੁਸੀਂ स्टॉप लॉस नहीं लाया वो रियल 5000 निकल जाना है एटलीस्ट ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 7 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ 1 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇਣਾ आई डोंट केयर लेकिन सिर्फ गो स्लो दैट्स ऑल आई आस्क फॉर क्योंकि इसमें आपने अभी सीपीआई देखनी है अभी आपने इंटरेस्ट रेट देखना है अभी आपने बहुत चीजें देख आज शाम गूगल की अर्निंग होगी आज तो मार्केट सही चल रही है कल आपने 2 दिन देखा क्या स्पीड थी राइट सो 3 माह में आपको ना इसका सारा फ्रेमवर्क नजर आ जाएगा कि यार ये और 3 माह में ना हर चीज पता लग जाती है सीपीआई पीपीआई इंटरेस्ट रेट लेजेंड आपको जॉल्ट्स का भी पता लग गया जॉबे कब आई है मार्केट गिरनी स्लोली शुरू हो रही है एक देखें जी एक और मिड बैंड अगर आपने वहां सेल किया होता 51 पे इस दफा तो वो नीचे 2 पॉइंट दिया था इसने मैंने देखा नहीं अच्छा लेकिन 1 पॉइंट नहीं लेकिन 51 सेल बनता है जी कम देखें 51 से आपने सेल किया है हाँ नहीं सब कुछ ठीक है जी मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही चीज तो अभी तो नैस्डैक का थोड़ा सा पुश नीचे हुआ तो आपको ये 2 पॉइंट तो दे जाएगी लेकिन सिर्फ ओनली चीज है लार्ज ट्रिगर्स पिंच हो रहे हैं लार्ज ट्रिगर्स जो है ना वो ग्रीन हो गए हैं पर लेकिन यहां से भी 2 पॉइंट देखते हैं देती है कि नहीं लार्ज ट्रिगर्स 15-10 में ट्विस्ट हो गए थे पहले मिड बैंड में नहीं हुए थे लेकिन 30-20 के लार्ज ट्रिगर्स वाइड ओपन है इस वक्त 30-20 का मिड बैंड टच हुआ वैसे No, not in this one. That second stage. They just test. ये भी मिड बैंड आपको दे गया कोई सर दे गया है देखिए वो 30-20 का मिड बैंड था ना वहाँ लार्ज ट्रिगर वाइड ओपन है वो ठीक है मैंने आपको अर्ली हिंट दे दिया था कि वो ग्रीन ट्विस्ट हो रहे हैं तो 30-20 का मिड बैंड में बहुत वाइड गैप है तो 30-20 में भी चांसेस है कि ये नीचे आ सकता है और अभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था 8.5-9 तक खड़े हो सकते थे बड़ा गैप ट्रेड दिया इसने 30-20 में ट्वाइस ये गैप ट्रेड रिट्रेसमेंट डाइवर्जन को ही कहते हैं देखिए प्राइस ऊपर आई एक भी डॉट ऊपर आया 30-20 में एक भी स्ट्रेंथ ऊपर आई ब्यूटीफुल गैप ट्रेड so if you had sold from 51 you probably made some money from there too for 3 points सर 10 साल नहीं ये स्टडी आज की नहीं है ये स्टडी 18 साल 20 साल की है 20,000 से ज्यादा नहीं देखें आप इतना तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना कि यार हम कुछ कह रहे हैं तो किसी रीजन से कह रहे हैं नहीं कंफ्यूजन मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि लार्ज ट्रिगर ट्विस्ट हो रहे हैं लेकिन 30-20 पे नहीं हो रहा तो वहां का मिड बैंड ले लो यार तो बड़ी सॉलिड स्टडी है नाइट सेशन वाली भी वैल्यू एरिया वाली भी मिड बैंड की भी एरिया के भी
और डाइवर्जेंस थोड़ी सी करती है। 30-20 की भी आज देखें, उसने लगा के लाइन फिर ऊपर चला गया। देखिए आपने भी पहला ट्रेड डाला होगा, प्रॉफिटेबल जा रहा है ना। 2 ट्रेड मिड बैंड के नीचे आते हुए पकड़ लिए, 5 ऊपर गए, 2 नीचे आए। $700-800 का दिन था आज स्लो मार्केट में। जिस दिन ट्रेलिंग आ गई आप लोगों को, उस दिन फायदा बेहतरीन हो जाएगा। अब हायर लो लगा है जी 15-10 में। अभी भी लार्ज ट्रिगर्स आर वाइड ओपन ऑन नैस्डैक। कहां तक गई है? 580 से ऊपर गई है जी। एक सेकंड जी, 500 मुझे 576 ओके, लेकिन सपोर्ट बना के वापस चली गई थी। आप देखें ये, अब ये देखें कि R1 को सपोर्ट बनाती है कि नहीं। ये मुझे गुस्सा दिया इसने, 694 से चली गई। इट्स ओके। अभी भी जा रही है 30-20 वाइड ओपन है। शॉर्ट हैपन्स मच फास्टर। If you sold at 51, you're making profit. Congratulations. इतना सा 2 ट्रेड लिए, $300 बन गए। क्लोज बटन दबा दें, that's it. ये प्रैक्टिस करनी। अब फिर ऑर्डर लगा दें 49 पे, क्योंकि मिड लाइन कहां पर है? 49 पे। तो वहां जाएं, मिड लाइन पे ऑर्डर लगा दें। सेल नहीं, नॉट सेल, सेल लिमिट, नॉट सेल लिमिट। गो अबव सेल लिमिट। First one, sell limit 1 at 6049. Go above, make a X and Y, the crosshair. The computer is saying 6047 now. एरिया पे आ गई है जी। R1 पे देखते हैं बाउंस। अब दोनों सिंक हो चुकी हैं, वेरी क्लोज टू नैस्डैक उतर आई है जी। बड़ा प्यारा ट्रेड लगा, वेरी नाइस। 8 पॉइंट यार, वेरी गुड यार, कंग्रेचुलेशन। ऑटो ट्रेल में जितना मजा आना शुरू हो जाए ना, मैनुअल कर रहे हैं। अभी भी गिर रही है वो। अब यहाँ से नैस्डैक को चढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एरिया के अंदर नैस्डैक 520 से 500 मिड पॉइंट 496 बनता है नैस्डैक में। सर सेल ही रहना है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। बाइज नहीं जाना जदों तक कलर मेरा नहीं जानता। R1 guys for Nasdaq now. It does it. Let's see if it acts like a support.
should be looking at this. Right now. Just सर 500 भी देख रहे हैं, मैं ना पता ईएस तो देख रहे हैं 33 ਦਾ वर्जन टॉप ऑफ द वैल्यू एरिया 6033 देख रहे हैं 33 क्योंकि वैल्यू एरिया है नहीं कल दा तो नैस्डैक बढ़ेगी तकरीबन मिड पॉइंट थे 496 तक हाँ 500 क्योंकि वैल्यू एरिया 35 तक आ रहे हैं it shouldn't have changed. Did you create an expert and did you move your charts? Yes, but 30-20 on midnight peak. Everything, all the charts and everything will be controlled for yourself. Did you see this? Last I can show you that. Don't even think about it. All right, and mid-band did not work. It was too far, but a gap trade. Price still stay in selling, guys, not in buying. Because Nasdaq has a support until 520, 540, and a midpoint is Okay. Now, let's see. Over here. अब 66 से कोई ट्रेल करता हो आ रहा हो तो पर इतने ज्यादा पॉइंट्स जनरली लोग हौसला नहीं रखते छोटे अकाउंट वाले कि eventually goal your position trading भाई point to point देखिए मिड बैंड आया 45 पे almost let's see if it gives you it's coming from an area it's bouncing from 44 ठीक है 47 See, when you see this, you see an arrow, right? You click it once. लेकिन 45 से भी एक पॉइंट दे गया हो Wherever you want to take it, I don't know who took 45 but कोई वाले it's okay sir stop loss. See, since you bought, you have to stop loss on the other side. Since you sold. Now, you don't want it to be negative. So let's say on the green side, take them out. On the green side, above, this is your current price. Go up a little further up. From the middle of the map. The middle of the map, yeah. Click that. Yeah. Yeah. It's already good. That's it. You do money out of it. So you place the order number. Now to create a stop loss, this is the price you put the order in, that's the price current price. So click over here. From the middle of the month. No. 30-20 का मिड बैंड देखते हैं अभी टेस्ट हो रहा है 47 में आप पिक हुए नहीं अभी तक Stop. That's the price you got it at. Now go to the other side. This side. No, this side. That's side. From the middle of the mouse. From the middle of the mouse, click it. आ गया जी 47 से एक पॉइंट दे गया आपको That's your stop. ले लिया जी Click your mouse from there. ठीक है As long जी as it's sitting over here. हौसला पहते रहे ना गलत है ठीक है नो ब्रो
Now, if you want to move your stop loss, press from the left side. just press 30-20 एक पॉइंट ही बहुत सी लार्ज ट्रिगर्स बिल्कुल पिंच हो गए ने सर वो देखो नहीं वो देखो एक दो लाइना आके ना बिल्कुल जुड़ गई हैं थल्ले वो लार्ज ट्रिगर्स ने ना ਇਹਦਾ मतलब है अगर स्वैप हो गई हैं तो ਹੁਣ ग्रीन ਦੀ तरफ चला जाएगा नहीं नहीं पिक होया एक पॉइंट ले लिया ਤੁਸੀਂ एक पॉइंट ले लिया दोनों भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं it's the same thing so you have to this is important whatever instrument you take it from here and whatever account you take so this is a demo account once you have a funded account the name will come right there choose that and then you have to choose here as well because these two things don't work with these two so you have to select them. The back end is same, but you need to select because it's a different block. So it's easier to move the So I didn't sell it before. No, you didn't sell, it went, you pressed it twice. When you press it twice, it takes your profit and then takes your order as well. Okay? Then it's like we can buy. You can buy, not here, because this is bullish, this is bearish, this is bullish. So wait for the color, change the color. Here we have to see whether it's going and Yes. Because in this whole facade of making money or taking money, this takes command over this. Okay, this is factory, work line, that's a surprise. So for anything to change, it takes time. 2 times of this is once of this. You can see when the market is slow, this is going up and down. You are having waves of it, swings, reversals, but it's just going one line up and down. So you can choose in trading either on this, but if you choose to trade on this, then you have to look at both of them. take profit This one takes profit. that's all Hey, Mayo. How are you, bro? Good. How are you? So just practice either on loom, whatever you're comfortable with, practice on loom. If you're comfortable with loom, then do loom. If you're comfortable with this, then take another one. Oh, yeah, we've done all that. So that The plug is So just practice either on loom or on chart. Whatever you feel comfortable in, then you can use it. किससे करना है सर? इनके ज़्यादा फूल फूल नहीं है। देखें जी कितना प्यारा मिड बैंड 30-20 का 1.2 मिल रहे हैं कोई ठीक है नो प्रॉब्लम हर पॉइंट एनीथिंग अबव ग्राउंड इज अ गुड डे क्योंकि आपने उसमें प्रॉपर एनालाइज करके किया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये 30-20 15-10 पे गैप ट्रेड दे रहा है नो इवेंचुअली आपको सीख जाएंगे मैं भी वही चीज देख रहा हूँ जो लोग आप देखें अब मैं बाई करने का सोच रहा हूँ कि मिड पॉइंट है 6026 जी सर नहीं 60 मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मैं ये नंबर निकाल रहा हूँ एक सेकंड हाँ
आपने ऑलरेडी ये डब्बा निकाला हुआ है, यही बनता है ना। तो मैंने कहाँ से नंबर उठाया है? आपके हाई और आपके लो का दरमियान अगर यहाँ बना मिड पॉइंट पे तो बाय करूंगा ना। ऊपर से आ रही है ना तक तक तक, तो यहाँ 26 पे थोड़ा सा यहाँ मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट देगी तो यहाँ तो टेस्ट करेगी इसको मिड पॉइंट को, क्योंकि बेस तो 2 पॉइंट मैं इससे नीचे रख के मैं देखता हूँ कि ये मिड पॉइंट आपका 6026 बनता है। और 60 मिनट के चार्ट पे देख लें तो वहां पर एक लाइन भी है, इफ एनीबॉडी पेज अटेंशन, बट एनीवे हाँ वैल्यू लेकिन वैल्यू एरिया बनेगा ईएस का ऊपर है 35 पे है, उसके बाद 33 पे मेरा मिड बैंड बैठा है 60, तो every line is support and resistance, right? So if it's coming down, so and the next entry is your Fibonacci boxes, and अगर आपने फिर और वेट करना है तो फिर S1 पे चले जाएं। इतने ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि मैंने कहाँ से एंट्री लेनी है। गैप ट्रेड 1510 में था, लेकिन ईएस में वो हो चुका था, नहीं हुआ ईएस में, सिर्फ लार्ज ट्रिगर्स ट्विस्ट हुए हैं, ले गया जी वापस। अब नैस्डैक वाले भी ले गए, लेकिन 540 से इसको टर्न नहीं किया उसने। Large triggers are twisting. All right. कौन सी लाइन है जो पिंक भी हो रही है और ग्रीन भी हो रही है? तो वही तो मिड बैंड है। ये कैसे मिड बैंड नंबर दे दो, नंबर दिया Sorry guys, आपका जो कल का सेशन है ना, बंदा इन पर्सन करेगा। Okay, 9:40 मैंने कहा, क्योंकि he asked me, I said I will ask him. So no problem. और जी ग्रीन हो गया। हाँ हाँ नहीं नहीं, ये तो अगेन फिबोनाची बॉक्सेस हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होते हैं, इसको मैं नहीं देखता। ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी हैं, सपोर्ट भी है। ऊपर से आएगी तो सपोर्ट है, नीचे से ये फिबोनाची बॉक्सेस होते हैं। कुछ लोग सिर्फ इन बॉक्सेस में ट्रेड करते हैं, हाँ वो रेड वो, लेकिन वो मेथड डिफरेंट है, वो इसका फिर बाकियों से ताल्लुक नहीं है। वो देखने की स्विंग 38% आई, रेड फिल हुआ सेल कर दिया, नीचे से ब्लू फिल हुआ बाय कर दिया, तो वो मेथड है डिफरेंट है। तो अगेन एक और चीज मिक्स हो गई तो फिर आप कहेंगे यार ये अभी तक मिड बैंड ही सही रखें आप। ओवरऑल अगर रेड आता है तो नहीं रेड का मतलब है कि ये रेड फिल हो सकता है बॉक्स। ये जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं, बड़े चार्टों में। इस वक्त 60 मिनट ईएस में बॉक्स आया हुआ है येलो से इस साइड पे। ग्रीन बॉक्सेस जब आएंगे, एक सेकंड, हाँ 1440 में एक बॉक्स आया हुआ है, आके चला गया है, लेकिन तो ये जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स है ना, वी लुक एट ऑन बिगर टाइम फ्रेम, नॉट ऑन अ स्मॉलर। जैसे नास्डैक, हाँ लेकिन ये एक मैथ ही डिफरेंट है, वो कुछ और नहीं देख रहे, वो सिर्फ कोई नहीं है कि ये रेड आया आता है, लेकिन कुछ लोग इसको व्यू करते हैं कि मैंने यहाँ से सेल करना है, या तो आई डोंट पे मच अटेंशन। यस, लेकिन अभी देखें 3020 में वो बॉक्स आया हुआ है रेड वाला 6057, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये R2 R1 R3 है, रेदर देन के मैं इसको वो जो रीड करते हैं वो देखते हैं 6057 पे सेल करेंगे, वहां से उस बॉक्स के अंदर से सेल करेंगे और 1-2 पॉइंट लेके बाहर आ रहे हैं।
और अगर नीचे आएंगे तो आपको ब्लू एंड ग्रीन नजर आएंगे। जब ट्रेंड नीचे की तरफ होता है तो वो फिर आई बिलीव नीचे आएगा ब्लू पर, तो वो ग्रीन का वेट करेंगे, ग्रीन को फिल होने देंगे, उधर से बाई करेंगे। नहीं, इसमें रेड टू, हाँ ग्रीन टू बाय, लेकिन उस बॉक्स के अंदर से, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे वो। देखें अभी ग्रीन है, तो बॉक्स तो रेड आया है, इधर अपना 30-20 देखें। अब किसी ने 50 से सेल कर दिया था, अगेंस्ट द ट्रेंड किया ना, तो आप कहेंगे यार इसमें ऑपोजिट चलता है। फिबोनाची बॉक्सेस और ऑपोजिट। फिबोनाची बॉक्सेस कहते हैं कि ग्रीन टू सेल एंड रेड टू सेल, ग्रीन टू बाय, लेकिन बैकग्राउंड कलर के ऑपोजिट। अगर आप यहां देखें कहां पर आया, ग्रीन में आया ना, डब्बा रेड आया है ग्रीन के अंदर, तो वो जो डब्बे के अंदर से सेल करेंगे। तो फिबोनाची एक, उसके लिए पीएचडी चाहिए अगर खाली उसकी सीक्वेंसेस को पढ़ने हैं। तो अगेन हमने मैथ करके डाल दिया है आपको, क्योंकि लोग कहते हैं यार मैं उधर जाता हूं वो देते हैं ये, भाई मैं कहा जो चाहिए हमारे से ले लो, मीनिंग के हम सारा ही मैथ कर देते हैं, क्योंकि मेथड्स है ना, कुछ कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ कर रहे हैं डाइवर्जेंस, कुछ कर रहे हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड, कुछ एरिया कर रहे हैं, कुछ मिड बैंड कर रहे हैं। तो जो फिबोनाची बॉक्सेस कर रहे हैं उसने 6050 से सेल कर दिया था और 2 पॉइंट लेके बाहर आ चुका है वो, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड किया ना, तो वो फिबोनाची हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। लेकिन अब तो वैसे 12-1 बजने वाला है, आई थिंक टाइम टू wrap it up. So 4 hours. I don't think there is any more trade because 5 o'clock वो आ जाना है, the king of the world. 5 o'clock है। अच्छा शाम की ट्रेड बनती है। अच्छा 6 बजे वेट करें, रात का एरिया देखें, फिर वहां से बाय लगा दें। अगर और रात का एरिया देखें वहां से सेल करें, क्योंकि ये इस बंद अगले 4 साल जब जब इसने माउथ खोलना है ना, हमारे मार्केट में जलजिले आने। एरिया रात को एरिया देखें, नहीं चलाएं, मिड बैंड रूल नहीं चेंज होता, स्लो इतना हो जाएगा आप कहेंगे यार ये तो आ ही नहीं रहा। All right, see you guys, take care, and ending live, see you guys at 9:30 tomorrow. Take care guys. 5 mid bands to go up, 3 to come down. Everybody should be in profitable. Take care, best of luck.